ओके लेट हो गया यार, मैं सोता रह गया, नींद नहीं खुली। स्टूपिड। लेट्स गो भाई, नो वरीज। Given in positive integer and remove all the zeros from the decimal representation. N raised to 15. What? To n. Not equal to the answer plus equals to c, right? Wait, let me return. इतना तो चल रहा है ना? Yes. लेकिन we need to do something. C of your answer int to add equals to your int to add equals to c minus 0, minus 0, right? Yeah. And marks class to add 123 1, लेकिन इसमें अभी दिक्कत होगी, पता है? न्यू लॉन्ग लगाओ, चलो ये तो हो जाएगा। Let's write a test case of wait, what? Why isn't it showing? 2 3 3 4 0 pro। अच्छा ओके, नहीं 2 3 3 4 1 0 makes sense। 2 3 4 4 1 लॉन्ग ही है, कहीं अटकेगा भी नहीं अटकना चाहिए। cool। maximum alternating, you rearrange the elements in any order. The alternating score of an array is defined as 0 minus 1 plus 2। अच्छा तो और एलिमेंट्स का सम, इवन एलिमेंट्स का रिटर्न
return the maximum possible alternating score of num after rearranging its elements. ठीक है, 10⁵. possible rearrangements. तो इसमें कुछ नहीं है, एरे को आपको दो सब एरेज में डिवाइड करना है और उनके एलिमेंट्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है. Alternating score of nums. And you want the maximum score, right? You want the score to be maximum. Okay. तो इसमें हो क्या रहा है? We are given 1 to 3. 1 to 3. तो पहले try to pick all the biggest numbers. इसमें you will have to divide it into 2, 1. तो 2 में आप all the biggest उठा लो 2, 3, 1 में all smallest उठा लो 1. अब इसके स्क्वायर का सम माइनस इसके स्क्वायर का सम, राइट? यही है, यही यहाँ पर होगा. इसमें बिगेस्ट उठा लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 उठाने पड़ेंगे, 2, 3 and 1. नो, इनफैक्ट स्क्वायर की बात हो रही है तो माइनस. ओके, तो हमें माइनस से फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो इसने क्या करा, -3, -2 और 3 ले लिया, राइट? -3, -2 और 3 इसका सब ले लिया, -1, 2 ले लिया, माइनस हो गए. हाँ, मेक सेंस. तो इसमें क्या करो, सबसे पहले तो आप फॉर int I equals to 0 int n equals to nums dot size I less than n plus if nums मत करो, error I is less than, let's say 0, error I star equals to -1. After that you're going to sort error dot begin int positive group equals to आपका n, जैसे आपका 3 है, 3 के केस में 1.5, 5 के केस में 2 लेगा, लेकिन इसमें 3 आएगा. if n odd है तो पॉजिटिव ग्रुप बस, ठीक है ना? अब आपने सॉर्ट कर दिया सब को, -1 को हटा के. अब what you're gonna do is y int x equals to 0
अब int x equals to 0, x आपका 0 है. I'm going to return long already. Long x equals to 0, long y equals to 0, long added in x equals to 1 minus 1, added in x is less than p group. So what you're going to do is x long 2r equals to ar itr, right? And then you're going to do is 2 add star equals to 2 add and x plus equals to 2 add. That is it. And then itr minus and your added in x plus less than equal to plus answer equals to your x minus y return answer. और 3 के केस में 12 आ रहा है, इसके केस में 16 आ रहा है, बट नाउन्स की लेंथ 1 है. थ्री केस में 9 आ रहा है. लेट्स से अगर हम 3, 8 के केस में जाते हैं 64 minus 9. See out in x, you're gonna add 2 add this should work. In x 8 डाल दिया, y 3 डाल दिया. इसके केस में you could see x में 3 डाला, फिर 3 डाला, फिर 2 डाला, फिर 1 and 2, क्योंकि 6 थे. इस केस में x में 3 और 2 डाला, राइट? हाँ, this should work. 1 के केस में चल रहा है -1 0 0. ऐसे केस में 1 और 0 लेगा, बाकी वो 0 ले जाएगा. 2 होगी, इसमें 2 और 1 ले गया, 0 ले गया. हाँ, तो दिस इज करेक्ट. अब अटकना तो नहीं चाहिए. रुक जाएगा कहीं. 1 के भी केस में चल रहा है, 2 में भी चल रहा है, 3 में भी चल रहा है. नंबर डॉट लेंथ लॉन्ग में 10⁴ नहीं आना चाहिए. यस, std आउट हटा दो. यही करना है हमें. 0 + 2 राइट, मेक सेंस. सबमिट. गुड. What is our rank? 12,000 bro. That's what I was saying. सोता रह गया इसलिए. अबे यार, आज का बेकार आ जाएगा. You're given an integer capacity, a subarray is stable if its length is at least 3. The first and the last element, which are equal to the sum of all elements, are each equal to the sum of all elements. Okay.
All right. So you're given an array 1, 3, 4, 5, 1, what? 1, 2, 3, 4, 5. सबसे पहले तो आप इसमें प्रीफिक्स सम निकाल दोगे है ना. इज गोइंग टू बी 1, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15. अब जैसे किसी भी रेंज का चाहिए होगा, so if you want this range तो 10 minus this कर सकते हो. So in 10 इसका रेंज आएगा 9, 4 और 3, 2, 5, right? एक यहाँ भी 0 रख लो. And if you want the first 3 numbers तो 6 minus 0 करना पड़ेगा. ठीक है. Now your stable is अगर आपका hmm 7,000. okay. टेबल में किसी भी रेंज का आपको निकालना है. इसमें होगा क्या, कैपेसिटी. यार ठीक है. व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखाई दो भाई. वेट. hmm brute force so I think would give a TLE here. Brute force will give a TLE. स्टैंडर्ड सॉर्टिंग प्रॉब्लम भाई. जस्ट रिमूव नेगेटिव पैरिटी एंड सॉर्ट. क्या चल रही है रैंक आपकी? अथर भाई मैं क्या कहते हैं आज लेट 15-20 मिनट लेट ज्वाइन करा है. मेरी 7,000 हो रही है. whenever there is this contest I join you so I could have a company. thank you भाई आकाश भाई. लेकिन आप ये किसकी बात कर रहे हो? स्टैंडर्ड सॉर्टिंग प्रॉब्लम भाई. जस्ट रिमूव नेगेटिव पैरिटी एंड सॉर्ट एंड कीप द बिगेस्ट सील एंड भाई. अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन वो तो हो गया भाई. सेकंड क्वेश्चन हो गया. अतर भाई आज तुम्हारी रेटिंग बढ़ेगी भाई. मेरी नींद नहीं खुली इसलिए अभी 7,000 रैंक चल रही है. तीसरे पे अटका हूँ अभी. You're given an array capacity is stable जिसकी length at least 3 हो. First and the last elements are each equal to the sum of all elements strictly between them. Hmm. Brute force कर देखे क्या?
Return an integer denoting the number of stable arrays. इसमें stable सब arrays. अब 9333. Okay. 1 2 3 4 5 में 0 no सब array as first and last element. Wait, the first and the last element are each equal to the sum. Oh, अच्छा हाँ, first and the last element has to be equal. Okay. First and the last element has to be equal. Right, makes sense. Mm, mm, mm. तो हमारा होगा क्या? इसमें तो कोई एलिमेंट्स इक्वल ही नहीं है, so the answer would be 0. पहले हम कोई एलिमेंट अगर हमें इक्वल मिला, आई थिंक हमें सारे इक्वल एलिमेंट्स के पेयर्स इकट्ठे कर लेने चाहिए. 10 raised to 5, राइट. कैपेसिटी वो तो चलेगी, ठीक है, इक्वल के, और फिर उनके बीच की कंपेयर करनी चाहिए. आई थिंक वेट. द थिंग इज, अगर हमें जैसे यहाँ पे मिला x, यहाँ पे भी मिला x, राइट, बीच में कुछ भी नंबर है, we'll see इसका ओके. वॉइस इज लेस. अच्छा भाई, 1 मिनट में बोल ही दे रहा हूँ.
क्वेश्चन सही, अभी शायद यही है। अब आ रही है, बेटर आ रही है, बेटर। भाई सुबह तो हो ही गया, अंधेरे में क्यों हूँ भाई, वो मैंने लाइट ऑफ कर रखी है, वो बेटर लगता है यार। भाई what is your voice? भाई थर्ड क्वेश्चन की तो अभी सोच रहा हूँ, अप्रोच मेरी भी बनी नहीं है भाई। 1000 हो गए सबमिशंस, 9 and 9। फर्स्ट एंड एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, आर ईच इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली बिटवीन। मैं उल्टा, व्हाई नॉट आई ट्राई टू लुक इट एट अदर वे। I don't get it भाई, this is kind of can it be done। और कहाँ चल रहा है, बढ़िया भाई, बढ़िया चल रहा है। अभी उठाऊं जस्ट, तेरी आवाज़ आ रहा है, आ रहा ही, बट दूर से कम आ रही होगी यार, कोई ना, माइक नहीं है ना। कैन इट बी डन यूजिंग ऑर्डर्ड हैश मैप, थर्ड क्वेश्चन भाई। आई एम थिंकिंग, मतलब थर्ड क्वेश्चन की मैं अभी कुछ सोच नहीं पाया हूँ, क्या अप्रोच बनेगी। लेट्स ट्राई राइटिंग। तो ठीक है, यू हैव टू फाइंड सब एरे ढूंढने हैं, सब एरे ढूंढने हैं। हाँ, सब एरे of length greater than sub array of length 3 or more, right? 3 or more, sub array of length 3 or more, uh, 0 comma first equals to last and equals to sum of middle LEs, ये है ना, first equal to last equal to sum of middle LE। तो अब उसमें भी हमें सारे सारे केस बनाकर देखने पड़ेंगे। was equals to last equals to sum of the sub array clay, of course sub array clay you take a window 10^5 n square में आई थिंक हो सकता है, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ। मैं ब्रूट फोर्स से ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई ब्रूट फोर्स। लेट्स ट्राई ब्रूट फोर्स, जिसमें ना पहले आप सारे कॉपीज का अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा वेक्टर इंडेक्स स्टोर करेंगे हम इसमें। हाँ, एलिस, सो for int l equals to 0 is less than air size I plus अब आप क्या करोगे, एलिस के अंदर air I
राइट पुश बैक कर दोगे। मैं इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, उससे मैं कर क्या रहा हूँ, इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ। बस इक्वल लास्ट इक्वल सम ऑफ मिडिल इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ उसका। हाँ ए लेस देन, उसके हिसाब के आपने इंडेक्स स्टोर कर लिए। अब आप चेक करते फिरोगे कि कुछ तो सब है। हम्म 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 You're given an integer is considered stable if the length 3 or first or last element equal to the sum of elements strictly between them. हाँ ठीक सही बात है। Return an integer denoting the number of stable arrays. हम्म डीप तरफ से अगर हम सोचें। ओके कैपेसिटी ये है स्टेबल बिकॉज द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर बोथ 4। हम्म हम्म 1 2 3 4 5 इसमें तो चलो जीरो ही आएगा, कुछ मैचिंग नहीं है। आज सारे क्वेश्चन हो गए बट फोर्थ वाले में मेमोरी लिमिट एक्सीड दे रहा है मेरा। ओ भाई मैं तो थर्ड पे अटका हूँ, थर्ड पे मेरे को पता नहीं लॉजिक नहीं बन रहा। आज का बेकार जा रहा है मेरा। डिनोटिंग द नंबर ऑफ स्टेबल array contiguous नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन array। आपको सब array ले क्या कर रहा है यार। 9 3 3 3 9 स्टेबल 3 3 3 स्टेबल।
वन -4 के केस में -4 देखेगा। Should I just do brute force? Let me try doing brute force. Vector int prefix sum for int I equals to 0, I less than error dot size I plus plus, right? Prefix sum के लिए ऐसा ही होगा ना, you have like 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें आपको जैसे इसका निकालना है 0 1 3, और लेट्स से आपको 1 3 3 2 5 5 4 9 9 5 14, वेट करेक्ट है ना, 1 plus 2 is 3 3 plus 3 is 6 6 plus 4 is 6 10, और ये आ गया आपका 15, राइट। अब आपको जैसे पूरे का निकालना है, ठीक है, अगर आपको इन 3 का निकालना है, इन 3 का निकालना है तो 0 1 2 3, सो आप 3 माइनस 0 करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, int temp equals to 0, temp plus equals to error I, prefix sum से निकालते हैं, and prefix sum dot push back temp, okay, that is it, ready, आपका prefix sum निकल गया। ब्रो मैं तो क्वेश्चन 2 में अटका हूँ। विजेंद्र भाई क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 क्या था? भाई विजेंद्र भाई, इसमें हिंट ले लो, हिंट ले लो कि हमें 2 सब एरेज बनाने हैं और एक सब एरे का सम एकदम मैक्सिमम रखना है और दूसरे का एकदम मिनिमम रखना है, तो कैसे करोगे? इन रेंज सम, अच्छा इंट नहीं, ये लॉन्ग लॉन्ग आएगा। लेट मी ट्राई ब्रूट फोर्स, क्योंकि उसके अलावा कुछ आ भी नहीं रहा दिमाग में। लॉन्ग लॉन्ग रेंज सम आपको, जिसमें आप लेकर जाओगे वेक्टर इंट एंड सम और इंट एक्स कमेंट वाई, इन दोनों के बीच का सम, राइट। अब आप क्या करोगे, इफ x equals to 0, so you're going to be return prefix sum of y, है ना। अगर आपको जैसे इसका निकालना है तो 0 और 3 दोगे आप इंडेक्स, तो आप सीधा 3 कर दोगे, हाँ, prefix sum of 3, else return long long answer equals to prefix sum, ये int नहीं होगा फिर ये भी long long होगा, long long vector int long long का prefix sum y minus 3 prefix sum, what are you doing, prefix sum x minus 1 answer, okay। अब आप पॉइंट
int answer equals to 0, int नहीं, long for int I equals to 0, I less than your dot size I plus plus. T goes to summer. Point j equals to 0, j less than not 0, j is less than j equal to n minus 1, and n equals to dot size, right, by मैं तो क्वेश्चन dot size j equals to n minus 1 और j n minus 1 है, j minus I should be greater than 3. J minus I मतलब if you are, let's say, 2 should be greater than equals to 2, जैसे 3 minus 1 would be 2, और ये चलेगा, 2 और 1 नहीं चल सकता, ठीक है. j minus minus if आप कह सकते हो अगर if ARI is not equal to ARJ, so you're gonna continue the you know what we can do, हम एक इंडेक्स से स्टोर कर सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट की जगह वो ले गए वेक्टर इंट इंडेक्सेस फॉर एली, राइट. अब आप क्या करो, जब आप जा रहे हो इंडेक्सेस फॉर एली में आप डालो ARI डॉट पुश बैक इंडेक्स, ओके, पुश बैक है, ठीक है, ठीक है. अब आप क्या करो, आपके पास कोई int CLE equals to ARI vector int indexes equals to your vector int indexes equals to your indexes for LE CLE int size equals to temp size equals to indexes dot size ITR equals to temp size minus 1. अब आप क्या करोगे, while j while j minus I is greater than equal to 2, तो ये सारे मैचिंग इंडेक्स ही होंगे, ठीक है ना. if long sum of middle equal to range sum using prefix sum ले लो, prefix sum और आपका x और y, हाँ, I, j, right. if CLE equals to your sum of middle, then you're gonna say answer plus plus, right, और आप कर दो j minus minus, right.
वेट, इसमें हमने उसका कहाँ यूज करा है? ओ रुक जा रुक जा रुक जा, ये है आपका ITR while indexes ITR, वो indexes indexes वो वाला इंडेक्स हो गया ITR, है ना, वो वाला इंडेक्स दिया और फिर ITR कम कर दिया। हम्म हम्म, हम्म, सब में ही जीरो आ रहा है। ओके लेट मी सी क्या दिक्कत है। सी आउट न्यू इटरेशन, ओके अब क्या करोगे? टारगेट इक्वल्स टू योर CLE, राइट, at index I, okay, and see out matching with index indexes ITR, see out range sum equals to sum of middle, see out match, ओके अब इसमें रुको, इसमें एटलीस्ट पता तो चलेगा। ठीक है, न्यू इटरेशन टारगेट इक्वल्स टू 9 at index 0 matching with index of 0 1 2 3 4 range sum equals to 27। कैसे? अच्छा आपको बीच का, ओके आपको रेंज सम उनका नहीं चाहिए, आपको जो प्रीफिक्स सम चाहिए होगा लेफ्ट +1 का चाहिए होगा और इंडेक्स -1 का चाहिए होना चाहिए। तो 2 आ गया पहले में, दूसरे में आ गया 0, तीसरे में आ गया 1। ओके चलो आ तो गया, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर TLE आएगा इसमें। लेट अस ट्राई, यू नो व्हाट, इसमें शुड आई केयर अबाउट एरर्स या सबमिट ही कर? 8000 बहुत बेकार रैंक आई। ओके नो वरी, वर्स्ट केस में n स्क्वायर जा रहा है। लेट्स राइट अ टेस्ट केस 1 1 3 4, this should return 0, this should return 0, राइट। अगर मैंने यहाँ 2 दे दिया एंड एक यहाँ 1 भी दे देते हैं तो दिस शुड देन रिटर्न 2, दिस शुड रिटर्न 2।
Hmm. 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 You know what? Let's just submit it. Fuck it. पर टीएल ही आएगी आई नो बट क्या करें अब टीएल ही आएगी क्या पता रॉन्ग सबमिशन ही आ जाए 201 and submit it. टाइम लिमिट एक्सीडेड पता था लास्ट के दो उसमें अबे यार how can you optimize this how can you optimize this hmm, hidden for this test case सारे मैचिंग पे चेक कर रहा हूँ उनका रेंज सम है ना बिकॉज बढ़ सकते हैं घट सकते हैं कुछ भी हो सकता है हाँ भाई सॉर्टिंग तो मेक्स नो सेंस hmm, hmm, if everything is same if all is same सी एक केस पता क्या हो सकता है वो जिसमें पूरा ही सेम होगा और bool all same equals to false equals to true if I is not equal to 0 and then error I is not equal to error I minus 1 तो आप कह सकते हो all same equals to false अगर all same है if all same तो आप ना टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने होते हैं हाउ मेनी सब एरेज फॉर an array of n plus 1 n into n plus 1 by 2 for an array the number of possible subarrays n plus 1 by 2 long total equals to total आपका होगा n star 1 l star n plus 1 by 2 ठीक है अब इसमें आप एक तो सारे वो करोगे और 2 उसके माइनस करोगे है ना ये माइनस करोगे 1 2 3 4 तो टोटल माइनस इक्वल टू n पहले जितने को है टोटल माइनस इक्वल्स टू n माइनस 1 रिटर्न टोटल ठीक है ना पहले सारे सिंगुलर माइनस के लिए कि 1 2 3 4 5 और फिर जितने डबल 1 2 3 4
इससे होगा क्या, आपका जो सेम होगा ना पूरा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। 31113। हम्म। अच्छा 744। एक मिनट, पिछला पिछला सबमिशन क्या था? हाउ डू यू सबमिशन, पिछले सबमिशन में 745 चले थे। अच्छा इसमें तो एक गलत आ गया, ऑल सेम है, तो इसने क्या करा, आउटपुट 10 दे दिया। स्टेबल सब एरर बताने आपको, 10 दे दिया इसने। एन एन प्लस 1/2 एक्सपेक्टेड 4। अच्छा ऑल सेम है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ऑल सेम है, ऑल सेम है तो ये रिटर्न तो करेगा ही नहीं, वो कर देगा 3, 1, 2, 3, 4। 3, 4, 5, 6, 6 माइनस 2 कर देगा, 1, 2, 3, 4। हाँ सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया, रिटर्न n-2। 1, 2। इसके केस में होगा 4 है ना, तो 4 इंटू 5 20, बाय दो 10। 10 में से पहले वो 4 माइनस करेगा, फिर 5 माइनस करेगा। नहीं, n n+1/2। 4 इंटू 5 है 20/2, 10। 10 में से पहले वो ये 4 माइनस करेगा, राइट, फिर 3 माइनस करेगा। हम्म। एरर, वैसे लॉजिक अभी भी टीएल ही आएगी, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। एरर 0 इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपली रिटर्न टीएल ही आना है। इसके केस में 3 आ गया, वैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट 3। टाइम लिमिट exceeded, that's what I'm saying, stupid. प्लूटो रैंक 1500 पहुंच गई, अरे नाइस ब्रो। प्लूटो भाई, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, ऑलराइट। और जिससे चीटिंग करनी है ना भाई, दे आर नॉट वेटिंग फॉर अ पर्सन लाइक मी, एवरीबॉडी डू। A lot of people attempt contests live, और जैसे चीटिंग करनी है, they just go to ChatGPT or any other thing. If you don't like the stream bro, you're free to exit this at any moment, right? But grow up. Hidden for this test case. You're given an integer array capacity. 3000 people have solved it. TLE दे जा रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ भाई, मेरी रैंक तो 10,000 पहुंच गई होगी कुछ, 8,000, वही तो आज बहुत बेकार गया है। मैं ढूंढ रहा हूँ, वेट, आई एम फाइंडिंग एलिमेंट्स व्हिच आर
एन स्क्वायर में नहीं चल सकता, वही तो दिक्कत है। 1 2 3 4 5 कांट थिंक ऑफ एनी अप्रोच ब्रो। मेरा अच्छा गया, सारे हो गए थे, बस फोर्थ वाले की जी मस्ती देखो। पहले टीएलई फिर मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। भाई अगर हो जाता था तो भाई तो ऑल किल हो सकता था। डैम। Stable because the first and the last elements are both -4 and the sum of elements is strictly between them. What can I even do? इसमें आपको इक्वल एलिमेंट्स ढूंढने हैं और फिर चेक करना है। इक्वल एलिमेंट्स ढूंढ लिए, फिर चेक करना उनके बीच का सम इक्वल है कि नहीं। I did that by equal elements का वो करके। हम्म। इक्वल एलिमेंट्स ढूंढने हैं। Who attempts contests live? I have reported you already to Leetcode. During people upload videos of doing contests after. Okay, bhai, okay. You were given an integer. We are finding. A subarray is a contiguous equal elements ढूंढ रहे हैं and we how do we even do this? 9 3 3 9 1 2 3 4 5 equal elements ढूंढने के बाद उस रेंज। I don't get it. I don't get it. Bro, instead of crying about go solve the contest, why are you wasting time here? प्लूटो भाई प्लूटो भाई, वही तो भाई। रो एंड सूजा ब्रो। आई थिंक प्लूटो इज प्रोबेबली लाइक स्टिल इन हिज फर्स्ट और सेकंड ईयर, उसको पता नहीं है हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। ही थिंक्स मेरे जैसा लाइक अ 20 सब्सक्राइबर गाय स्ट्रीमिंग एंड पीपल आर चीटिंग फ्रॉम मी। भाई मेरी स्क्रीन देखकर लोग स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से टाइप करेंगे क्या? गो एंड स्टडी ब्रो। वही एग्जैक्टली लाइक ब्रो गेट अ लाइफ। यहाँ पे सारे एक बारी कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद लीडर बोर्ड देखियो भाई, द टॉप टॉप 50 में से अराउंड 20 लोगों ने कर रखी होती है जीपीटी से चीटिंग। व्हाट ईयर आर यू फ्रॉम ब्रो प्लूटो? 9 3 3 9 1 2 3 4 5 -4 stable because the first and the last element are both -4 and the sum of elements I can't think of any यार, अब समझ नहीं आ रहा। And what's the last question?
Count distinct subarrays divisible by key in sorted array. Subarrays are distinct. 10 raised to 5. यार ये 10 raised to 5 ने ही तो परेशान करा है. Boss, I'm working. I have made contests for Leetcode and Code Forces, and I'm the one who report these cheaters you're talking about. So I think, bro, you might be bigger in age than me, but I guess you need a bit of mental maturity. Boss, I'm working. Can't think of anything here. No, can't think of anything. Minus 4400 minus. But I think I'll end at what rank? 8500. I should have woken up early today. Thanks. Good luck. Good luck, bro. Good luck. Bro, which college are you from? By IPU. IPU from Delhi. आज का कॉन्टेस्ट बुरा गया भाई. हाँ भाई, बहुत बेकार गया आज का कॉन्टेस्ट भाई. आज मैं उठा भी तो अराउंड आई थिंक 10-15 मिनट. तुम्हारा कैसा गया विजेंद्र भाई? कितने हुए? Do we need to pop out chat? I don't think so. No. It's the problem list. Bro did every question in 5 minutes. That's crazy. This man, I'm genuinely like clueless. How can we optimize this? मजा तो आया मेरे को. आज मस्त रैंक है मेरी. Only one question. Same I'm from. ये sponsored है. Sponsored है. ये sponsored है bro. Is this contest sponsored? हाँ. Oh yeah, you're right. Sponsored में tough बनाया होगा. I am from IPU mate. Good bro. कितनी रैंक बन रही है थर भाई? कितनी रैंक बन रही है? वैसे इसमें प्रीफिक्स प्लस हैश मैप लगेगा, समझ रहा, बट कैसे करना? हाँ भाई, मैं भी वही कर रहा था. मतलब प्रीफिक्स प्लस हैश मैप में सारे सेम एलिमेंट्स का इंडेक्स स्टोर कर लो और फिर मतलब प्रीफिक्स सम से चेक कर लो रेंज का सम. लेकिन ये भी वर्स्ट केस में आई थिंक एन स्क्वायर जा रहा है, तभी अटक रहा है. 1656 भाई साहब. अथर भाई तुम तो इस कॉन्टेस्ट के बाद 1700 पहुंच जाओगे. Solve 2 question rank 5.7k but no clue for third. Good bro. My rank is something around I guess. मैं आज 15 मिनट लेट उठा. मेरी 8000 है. सवार इज कंटी क्विज ऑन एंड इतने ही हो पाएंगे. सुपर अथर भैया. Which year? भाई I'm from 4. I'm in my 4th year. I'm in my 4th year.
8,500 probably will go about. राइडर विंडो यूज कर सकते हो बट वो टीएलई देगा थर्ड में टीएलई. तो अतर भाई हाउ डिड यू डू द थर्ड क्वेश्चन? अपनी अप्रोच बताना अतर भाई. हाउ डिड यू डू द थर्ड क्वेश्चन? Who was that guy? That Pluto bhai? Is he still in the stream? Explain that. Explain that guy. This is a Code Forces contest. Pluto भाग गया होगा. That like I don't know. This is a Code Forces contest, or this guy is a ICPC finalist, and he is live streaming the Code Forces contest while it is happening. All right. It's not just me. और इनके तो 2000 सब्सक्राइबर हैं. Okay, he's streaming. Okay. Unordered map, long. Unordered map intent. Did 2 got TLE in third, could have done 3/4 for the first time. उत्कर्ष भाई कल का कॉन्टेस्ट नहीं दिया था क्या? कल का कॉन्टेस्ट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ वेरी इजी. अनऑर्डर्ड मैप लॉन्ग अनऑर्डर्ड मैप इंटेंट यूज किया है, थोड़ा तगड़ा ही डेटा स्ट्रक्चर बना दिया है. समझा नहीं भाई? हाउ डिड यू पिक अनऑर्डर्ड मैप में लॉन्ग अनऑर्डर्ड मैप इंटेंट. I think that Pluto guy left, right? Pluto guy left. There's this guy who's literally like Leetcode bi-weekly contest. See, he also did bi-weekly contest. Unordered map क्या unordered map? कल got 2/4 again got TLE in third. Problem is अभी तक DP नहीं पढ़ा है. So fourth question is mostly out of picture for me. हाँ okay, but कल का थर्ड में TLE क्या था? अच्छा, कल का सेकंड क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन अलग ही डायरेक्शन में सोचा स्टार्टिंग में मैंने. हाँ सेकंड क्वेश्चन में. हाँ मतलब उसमें यू कैन इजीली रियलाइज कि लीड कोड में ना इतना भयानक नहीं होगा. उसमें सीधा 9 मतलब 999 ऐड करते चला जाना था ना. सेकंड क्वेश्चन हाँ उसमें पैटर्न देखना था. कल गॉट 2/4 एज वेल. भाई कीप प्रैक्टिसिंग उत्कर्ष ब्रो. 2/4 is also like a good number. 2/4 is also like a pretty good number. कल का थर्ड वाज n+1 आ रहा वाला. हाँ यस आई रिमेम्बर दैट. उसमें टीएलई आई थिंक आप अप्रोच गलत होगी, क्योंकि टीएलई तो आई डोंट थिंक सो आना चाहिए था. एरे को इटरेट कर रहे थे. बिग ऑफ एन में हो जाना चाहिए था. आई डोंट नो, प्रोबेबली यू वर डूइंग समथिंग डिफरेंट. राइट. कल का थर्ड एंड ऑल दैट. सॉल्व टू क्वेश्चन. द वर्स्ट थिंग इज मैं आज 15 मिनट कितना 15-20 मिनट लेट उठाऊं. उसके चक्कर में मेरी रैंक गई यार 8600. That's the worst part about it. खत्म हो गया. Let's check it out. Oh wow. I got a badge. Save image.
Let me see, जैसे ये इंडियन है ना, this guy would have probably, no, he did it himself. mm, Bro, Chinese people are crazy on Leetcode. Look at this, ये तो चलो competitive programmer है. Japanese, Thor, Arya, damn, Yoshimitsu. 1720 भाई साहब, मेरी तो बेस्ट रैंक की आज तक. इट्स सम, कल के कॉन्टेस्ट में गई थी 3000 कुछ. 1720 तो बहुत बढ़िया है ब्रो. वन सेवन टू जीरो इज ग्रेट. ओनली 1K ऑल किल्स. 1K भी आई थिंक, ओ हाँ, 1K भी काफ़ी भाई, काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक. 1000 भी कैसे हो रहे हैं भाई. 1000 ऑल किल्स. अतर ब्रो व्हाट्स योर, पुरीश, अरे वो भी चीटर है बट वो कमेंट्स हटा दिए उसने. उसने देख लो कॉपी पेस्ट किया है. नहीं, कुछ कुछ केसेस में होता है भाई कि वो अपने खुद के आईडी पे करते हैं, जैसे VS कोड वगैरह पे करा और फिर वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया. कुछ जैसे कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स में, कोड फोर्सेस में सब वैसे ही करते हैं ना, प्रोबेबली. सारे अक्सर हैं टॉप के चीटर्स. हाँ नहीं होता, मतलब बात तो सही है, लेकिन जैसे ये तो बंदा है, ये तो लेजिट है भाई ये. इफ n इक्वल टू 3 इसने करा क्या है, हैश बना लिया. ओके, अच्छा कुछ हैश बना कर ही करा है. प्रीफिक्स हम बनाया. हाँ. हाँ. अच्छा ठीक है, ये तो कस्टम हैश बनाया. ब्रो आई डोंट गेट इट. ब्रो ये चीटर है, वहाँ देखो. सेल्डेरियन. व्हाट डिड यू से ब्रो. जस्ट स्टार्टेड गिविंग कॉन्टेस्ट. गुड ब्रो, जस्ट अगर आप कॉन्टेस्ट के स्टार्ट में ही 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो अच्छी बात है. रैंक 1 गाइस आर नॉट इवन रिमूविंग कमेंट्स. शेम ब्रो. रैंक 1 गाय. वेयर ब्रो. नहीं तो दिस गाय तो सीम लाइक अ लेजिट, लेजिट पर्सन यार. ये चाइनीज लोग तो क्रेजी होते हैं. ये देखो लीड कोड चाइना का है ये. प्रोबेबली. एल्गो. ये भाई भी है रैंक 1 गाइस, नॉट इवन. आना. हाँ ये देखो, ये तो जैसे पूरी इनकी कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स की वो होती है टेम्पलेट. अरे काश सक्स. हाँ ये देखो. डैम. सेकंड पेज पे हो. सिद्धार्थ भाई जैसे, लेट्स लुक एट हिज प्रोफाइल. सिद्धार्थ ब्रो, ये देखो. 5, 1500 भाई साहब. अबे लिंक्डइन ही नहीं चल रहा इनका. डू दीज कॉपी पेस्टर्स, ही जस्ट सॉल्व 50 प्रॉब्लम्स. ये चीटिंग में ही होता है. जीपीटी से कोड लेने पे ना वो इनपुट एरे का एक और कॉपी बना के वियर्ड नेम देता है लाइक सेल्डेरियन. ओह ओके. डू दीज कॉपी पेस्टर्स गेट रिमूव. हाँ भाई काफ़ी. अभी जैसे मेरी रैंक देखो अभी, मेरी रैंक बन रही है ना 8600. ये और कम होती जाएगी क्योंकि काफ़ी चीटर्स डिलीट होते जाते हैं, उनको रैंकिंग से हटा दिया जाता है. लाइक दे डिडंट इवन रीड द क्वेश्चन. अरे लीड कोड के क्वेश्चन को कॉपी करो तो एक लाइन इनटेक कर देते हैं. हाँ ताकि ट्रैक हो सके चीटर्स. Now guys are even solving question in 2 minutes. Didn't even read the lead code question. भाई अब, हाँ आई थिंक 2-2 मिनट में करना तो पता नहीं भाई. बहुत ही कोड फोर्सेस के टॉपर्स करते होंगे. लाइक लेट्स लुक एट दिस गाय. अच्छा चलो, इससे तो यू वुड एक्सपेक्ट ही इज 2800. दैट्स क्रेजी. वेयर वाज अजिंक्य परब. यू वुड एक्सपेक्ट हिम. इनकी वो है लिंक्डइन. नहीं, 2800 तो भाई डैम.
अभी 10 आज, बल्कि आज तो चीटर दिख ही नहीं रहे यार ज्यादा, वरना तो कुछ होते थे लिटरली जीबीडी कमेंट्स भी डिलीट नहीं करते थे, इतने पागल। और मेजरली अपने इंडिया से ही होते हैं, आज दिख नहीं रहे ज्यादा। डोंट फॉरगेट लॉन्ग लॉन्ग ड्यू टू ओवरफ्लो, ओनली सीपी guys can do for so far as they're good at greedy and optimal. हाँ, bro, I always end up thinking about for solution. I can't think of optimal one. How to do that? Why? I'm also still learning. बस जितनी प्रैक्टिस करूँ, मैं भी तो देखो थर्ड क्वेश्चन के ब्रूट फोर्स पे अटके रह गया, आई कुडंट लाइक ऑप्टिमाइज इट, टीएलई आ रहा था, लाइक आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड डू द ब्रूट फोर्स बट इट गेट्स टीएलई। हाँ, वहीं पर थिंग है, यू विल हैव टू लर्न डिफरेंट पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स। अगर कोई सॉर्टेड सर्च स्पेस है तो वहाँ पे रादर देन गोइंग इन सिंपल बिग ऑफ एन आप बाइनरी सर्च यूज कर रहे हो, ऐसे यू विल हैव टू लर्न डिफरेंट पैटर्न्स। मैं भी सीख ही रहा हूँ ब्रो, आई एम नो एक्सपर्ट। कितनी कितनी रैंक आई भाई हाईएस्ट गेमिंग योर, कितनी रैंक आई योर ईयर ब्रो? आई एम इन माय फोर्थ ईयर। डीएसए के सारे टॉपिक्स किए हैं आपने, लाइक कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं अभी तक? सेम ब्रो, गॉट स्टक इन टीएलई ऑफ थर्ड क्वेश्चन, आज आई हैड टू लुक हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लॉन्ग लॉन्ग, लाइक इतना सर्च। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली, सी एज लॉन्ग एज यू सर्चिंग की कोई ऑपरेशन कैसे होता है जैसे, या फिर कोई सबस्ट्रिंग कैसे निकलती है, मतलब सिंटैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आई डोंट थिंक सो वो चीटिंग है। 9K, गुड ब्रो, डीएसए के सारे टॉपिक्स करे नहीं भाई, अभी ग्राफ्स के कुछ बचे हैं मेरे, ग्राफ के कुछ बचे हैं और मेरे क्वेश्चंस अराउंड 293, और कोड फोर्सेस पे मैंने अराउंड 100 करे, लेकिन कोड फोर्सेस पे कभी वो नहीं करा, कॉन्टेस्ट नहीं दिया भाई। आई एम फ्रॉम फोर्थ ईयर, आईपीयू, आईपीयू, फोर्थ ईयर एंड आईपीयू। उत्कर्ष यूज स्टॉल स्ट्रिंग टू लॉन्ग लॉन्ग, अच्छा जैसे एस टी ओ वाई होता है स्ट्रिंग टू इंट, वैसे ही एस टी ओ एल एल स्टॉल। विच आईपीयू? मैं महाराजा अग्रसेन से ब्रो, तुम किस कौन से कॉलेज से हो? विच कॉलेज आर यू फ्रॉम? अथर भाई के देखते हैं, अथर भाई आज, हाँ अथर भाई वही देखा। अथर भाई आज बिना पूछे आपकी आईडी रिव्यू कर देते हैं यार, आपने वो क्वेश्चन कहाँ गया, स्टेबल सब एरेज, ये कैसे करा यार? प्रीफिक्स सम बना दिया, हाँ चलो ये प्रीफिक्स सम बना दिया, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, उसके अंदर अनऑर्डर्ड मैप इंट इंट, अच्छा, अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आपने की बनाया प्रीफिक्स आई माइनस वन, और एमपी की कैपेसिटी वन माई भाई कुछ भयानक ही कर दिया, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जो मैप में उस की पे है तो आपके पास एक नया मैप मिल जाएगा, उस मैप में कैपेसिटी, नया मैप मिल जाएगा, उस मैप में आपने कैपेसिटी आई माइनस टू को प्लस प्लस कर दिया, लॉन्ग लॉन्ग नीड इक्वल्स टू, भाई ये देखना पड़ेगा, तो भयानक लग रहा है। तो व्हाट्स दिस पॉप आउट चैट? कुरीश कल से कितने क्वेश्चन किए हैं ब्रो? इजंट दैट चैट जीपीटी सॉल्यूशन? कल से कितने क्वेश्चन किए हैं? कल से कितने? कल आई थिंक नहीं, मैंने कॉन्टेस्ट के अलावा नहीं करा ना कोई क्वेश्चन, कॉन्टेस्ट के अलावा कोई क्वेश्चन करा ही नहीं। कल भी कॉन्टेस्ट करा था, आज भी कॉन्टेस्ट करा था, अब आज डेवलपमेंट करनी है भाई, बहुत हो गया डीएस से, डेवलपमेंट के बिना भी नहीं मिलनी भाई। लमा ब्रो, आई रियली फॉरगॉट हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग, बात जरा ऊंचे लेवल की है। माई डीपी इज रिमेनिंग, भाई डीपी कभी पूरा नहीं होगा। डीपी में अब क्या है, अगर आप बिल्कुल डीपी तो बेसिकली, जैसे मैंने भी काफ़ी डीपी नहीं करा है,
लेकिन ना डीबी में यू कैन जस्ट डू रिकर्जन फिर मेमोराइजेशन कर दो। दी एक्चुअल दिमाग पता है कहाँ खराब होता है, जब आपको टैब्यूलेशन करनी है। टैब्यूलेशन में दिमाग लगता है। आई एम इन सेकेंड ईयर बाय द वे, थर्ड सेम। तो भाई यू आर ऑलरेडी डूइंग मच मच better than a lot of your peers. In fact, including me, मैं तो फोर्थ ईयर में। कल से कितने क्वेश्चन किए हैं देखो, 6 कह रहे हो। 680। ओ भाई, एक दो ये तो चलो अभी के थे। एक ये कर दिया, एक फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 भाई 12 तो यहीं से दिखा रहा है। इतने कैसे कर रहे हो भाई? आई हैव ओनली सॉल्व 200। हाँ तो भाई मैंने भी अराउंड 290 ही तो करे हैं। ब्रो अथर्व इज सच टू बी ऑनेस्ट। भाई अथर्व इज जस्ट वे टू कंसिस्टेंट। भाई इतने क्वेश्चन कैसे कर रहे हो? एंड डू गाइस नो अथर्व भाई अभी ड्रॉप ईयर में, कॉलेज में भी नहीं आया। डेव कितना हुआ और कौन सा स्टैक कर रहे हैं? मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है भाई। डेव में अभी मैं तो वही कर रहा हूँ, मन और पर्न स्टैक। एक दो फुल स्टैक, एक दो फुल स्टैक वो कर लिया करो, क्या कहते हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना लो, बेयर मिनिमम। चेक द सॉल्यूशंस। नहीं आए अथर्व भाई, अब कुछ ज़्यादा ही कंसिस्टेंट है। नहीं, आई हैव सीन, आई डोंट थिंक सो ही चीट्स। अच्छा ब्रो लाइक व्हाट इज दिस, ऐड टू इंटीजर्स, ये क्वेश्चन थोड़ी गिनेंगे। ये नहीं गिना जाएगा सर भाई, एक कम करो। ये नहीं गिना जाएगा। डिटेक्ट कैपिटल। भाई दिन भर बैठ के भी 3 क्वेश्चन होते हैं मुझसे। 3 क्वेश्चन। भाई ऑनेस्टली अगर खुद कर रहे हो ना तो 3 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। दिन के 3 क्वेश्चन। द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंट रहो। मेरा भी, और एक बार आपकी स्ट्रीक बन जाती है ना, लाइक मेरी देख लो, मेरी अभी चल रही होगी 160। अब मैं को तोड़ने में इतना डर लगता है कि ये टूट ना जाए, इसलिए जस्ट कीप कीप गोइंग। लीनियर टीएस हुआ है, नॉन लीनियर चालू हुआ है, ट्रीज पे हूँ। हाँ भाई थोड़ा। अब होता क्या है, मैंने जितने ओएस दिए हैं ना, अब उसमें वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। मैं डीएसए के अलावा भी कुछ नहीं करता कोडिंग में, सो आई कैन डू, एंड मेरे कुछ नहीं है, मेरे को कोडिंग आई कैन डू, मेरे और कुछ नहीं है। नहीं भाई अदर भाई आई नो, अदर भाई आपका तो ड्रॉप ईयर है ना, दैट्स व्हाई अभी आप डेवलपमेंट कर नहीं रहे। और जेई का यू टोल्ड 300 पीपल गॉट बैंड। हाँ देखा, रैंक बढ़ गई होगी। मेरी कितनी हो गई, 6,000 से 8,600 से 8,300। हाँ भाई इतने तो ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट में होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट। मैं डीएसए के अलावा पूछता हूँ। हाँ भाई, हु वाज दैट, रो एंड सूजा ब्रो। आई वांटेड टू से कि नॉन लीनियर डीएस जैसे अपना ट्रीज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। हाँ लिंक लिस्ट हो गया। उसमें क्या होता है, मैंने जितने ओए दिया, आई एम इन माय फोर्थ ईयर। इसमें क्या होगा, अब पीपल आर स्केयर्ड ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रीज, या फिर ग्राफ ही हो गया। ग्राफ से तो बच्चे बहुत डरते हैं। अब वो ओए में क्या करते हैं, वो आपसे ग्राफ क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीएफएस डीएफएस ही पूछ लेंगे। जिसने थोड़ा सा भी ग्राफ पढ़ा है ना वो उसे इजीली कर देगा। लेकिन अब बच्चे ग्राफ देख के इतना डर जाते हैं, ग्राफ देख के इतना डर जाते हैं कि वो उसे छोड़ देते हैं। तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ताकि ओएज में जनरली मैंने देखा, ओए या इंटरव्यू में भी वो ऐसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बच्चे डर के करते ही नहीं है। I think Leetcode has this feature that they ban the IDs who just came and solved all question, new IDs. नहीं भाई, I don't think so. मेरी रैंक 1624। अदरवाइज आपके सबमिशन देख लें, 1624। You would be on like page 100, not 100, 80 पेज पे हो गए भाई आप कुछ। 80 भी नहीं भाई, आप 80 पेज से भी कम, 70, 65। See, अब guys, I had a project idea in mind,
मेरा ना एक प्रोजेक्ट आइडिया था, गिव मी रिव्यू, लाइक डज दिस मेक सेंस। भाई मैं देख रहा ओएस में सीपी टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, उसका क्या करे, कोड फोर्सेस वाला क्वेश्चन पढ़ने में ही मौत आ जाती है जितने लंबे क्वेश्चन होते हैं। भाई अब देखो, अब लेट मी बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद यू। ओए में ना जनरली अगर घर से बैठ के दे रहे हो तो 99% पीपल विल चीट। अगर आप ऑनेस्टी से दे रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पासिंग द वे दैट यू कैन रीच द इंटरव्यू। ओए का तो ये सीन है, अगर ऑन कैंपस ओए हो रहा है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग कंपनीज फांग लेवल। हाँ भाई, गोल्डमैन सैक्स वो तो ऑफ कोर्स दे विल आस्क कोड फोर्सेस क्वेश्चन, वो आपको पे भी तो इतना भयानक कर रहे हैं। आई एम आस्किंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फांग लेवल कंपनीज और टीयर 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बाकी सारी कंपनीज इतने भयानक नहीं पूछते। एटलीस्ट अगर ऑन कैंपस ओए हो रहा है, घर से बैठ के नहीं दे रहे हो और क्या कहते हैं लैब में दे रहे हो, तो दे ट्राई टू कीप इट ऑफ एन ओकेश लेवल। एवरीबडी चीट्स बट नोबडी टेल्स। ऑफ कोर्स भाई, दैट्स द थिंग। अतर भाई 1624, हाँ आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। ट्रू, चीट ही करना पड़ता है घर से, राइट। भैया आप कौन से कॉलेज से हो? आईपीयू के मेट से हूँ भाई, आई एम फ्रॉम मेट। हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट आइडिया दैट आई हैड इन माइंड, जिससे मेरा ना, even I need a job, bro. Everybody needs a job. That's the thing. So this project idea I had in mind is I make a website जिसमें I make it easy for a person to find someone else's contest submission। जैसे अब मेरे को अथर्व के सबमिशन देखने हैं, तो मेरे को यहाँ पे ऐसे पेजेस नेविगेट करके उसकी रैंक के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ रहा है। बट व्हाट इफ आई मेक अ वेबसाइट जिसके अंदर आप सिर्फ यूजर डालो और उसका कॉन्टेस्ट नंबर डालो, और अगर उसने वो कर रखा होगा तो आप उसके सारे कॉन्टेस्ट सॉल्यूशंस दिख जाए, राइट। इससे चीटिंग आसानी से पकड़ी जाएगी कि इसने कॉपी पेस्ट करा है या वो। इसमें मतलब हमें लीड कोड की जो एपीआई, लीड कोड ग्राफ क्यूएल यूज करता है ना, तो ग्राफ क्यूएल एपीआई समझनी पड़ेगी, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ टफ। गेस माय कॉलेज ब्रो, इट्स इन जैक दिल्ली। भाई आप तो टीयर 1 कॉलेज वाले हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हाइस गेमिंग, यू आर प्रोबेबली फ्रॉम डीटीयू और एनएसयूटी। डीटीयू और एनएसयूटी, इट्स 1624। डीटीयू एनएसयूटी, नो ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी। ये रहता है ब्रो। व्हाट वाज, यस ट्रिपल आईटी, मैं आ रखा हूँ ट्रिपल आईटी काफ़ी बारी भाई। बट आई हर्ड कि अभी अभी डू यू नो अबाउट द न्यूज़ की एनएसयूटी से, भैया मैं थर्ड सेम में हूँ, मेड के प्लेसमेंट कैसा है? मेड के भाई प्लेसमेंट बुरा चल रहा है भाई, बुरा, ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेट मी टेल यू, लक है, बहुत बहुत ज़्यादा लक है। अब आई वाज टेलिंग अबाउट एनएसयूटी, डू यू नो एनएसयूटी में 150 बच्चे 12 एलपीए के पैकेज पे उठे हैं, विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी ऑनलाइन असेसमेंट, जस्ट बिकॉज वो एनएसयूटी में है। 100 बच्चे, 100 150 बच्चे। चेक रैंक 7 थॉर, रैंक 7। थॉर अकाउंट, लेट्स चेक हिज अकाउंट, सबमिशन क्या है? थॉर, हाँ तो दिस गाय इज प्रोबेबली अ चीटर, क्योंकि आई थिंक सो भाई। हु आर वी टू जज, मे बी कोई बहुत सीपी गॉड होगा, बट इट लुक्स लाइक ही इज चीटिंग। नए अकाउंट पे सीधा you're solving all 4 questions. You don't know this, I know, but that company will never visit and it was the Shaw. Which company भाई? वो यूनिफाई थी ना, यूनिफाई पिक्ड अप 120 समथिंग, लेकिन उन्होंने इंटर्न उठाया है। अभी पीपीओ किसी का गारंटीड नहीं है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो 120 130 उठाया है ना, उसमें से काफ़ी के पीपीओ रिजेक्ट हो जाएंगे। दे आर जस्ट हायरिंग चीप लेबर एट 25K स्टाइपेंड। यू डोंट नो दिस, बट भाई आप तो ट्रिपल आईटी से हो, यू शुड बी चिल। हाँ यूनिफाई एप्स, हाँ दैट्स द नेम। बहुत उठाया भाई उन्होंने। भाई एपेक्स भाई, द वर्स्ट पार्ट इज, मेरी तो आई ऑलरेडी गॉट एन ऑफर इन इन जून,
लेकिन तब से माई ऑफर इज ऑन होल्ड, तो मैं वापस आ गया हूँ. माई चैट इज नॉट शोइंग हियर. नो भाई, आई कैन रीड योर चैट. I can read your chat, but that Guardian badge he got by cheating hurts because I'm trying so hard to reach night from so many months. भाई page number. DE Shaw banned students from cheating in Norway. DE Shaw banned students from cheating in Norway. अच्छा, जिन्होंने cheating करी है they got banned from DE Shaw in your college. Good भाई. या तो चीटिंग completely रोको या बिल्कुल मत रोको. Don't try to do it like कि कुछ ही cheaters को पकड़ा और बाकी cheaters बच गए. फिर तो it's again unfair. पकड़े कैसे गए? Unify app. Guardian. True. Not our college. Pavit, Pavit, Pavitraswat, Pavitraswat. Our college banned people from college itself. Lamau. भाई tier 1 colleges are strict about it, I guess. Strict होते हैं. NSUT ने बैन करा है. ओके. हाँ, NSUT DTU में बहुत पॉलिटिक्स चलती है. उनके तो प्लेसमेंट चल में क्रेजी पॉलिटिक्स. अतर भाई, नहीं मैं आपका वो ही देख रहा था. मेरे को आपका सॉल्यूशन समझ नहीं आया, मेरे को समझना पड़ेगा. अभी मैं वो देखूंगा. Which year are you in? मैं 4th ईयर में हूँ. एंड ऑनेस्टली भाई डोंट केयर अबाउट दिस रेटिंग एंड नाइट बैजेस. कोई फायदा नहीं है. अब चीटिंग कह रहा हमें ना, यू नो हर कोई कॉन्टेस्ट चीटिंग से देता है, तो अब कुछ बचा नहीं है इसके पीछे. और स्पेशली तुम्हारा एवरेज प्लेसमेंट क्या है पुदीश? एवरेज प्लेसमेंट सी, इफ आई वर टू टेल यू, मुझे तो आई गेस जून में ही एक ऑफर मिल रखा है. इट वाज अ वेरी गुड ऑफर, लेकिन तब से वो होल्ड पे है. इट्स ऑन होल्ड. लेकिन अपने कॉलेज का एवरेज इफ आई वर टू टेल यू, आई थिंक 6 होगा. 6 to 7, ज़्यादा नहीं. मेजॉरिटी इन्फोसिस में ही गए हैं भाई. मेजॉरिटी इन्फोसिस में ही गए हैं. क्या? कितनी एलपीए का है बता दो. क्या ब्रो? क्या कितने एलपीए का? आई टोल्ड यू इट्स अबाउट 6 to 7. अपने कॉलेज का मीडियम. भैया हर बार 2 क्वेश्चन ही बनते इतने मन से, 3rd क्वेश्चन कैसे करूँ? कंपनी ही नहीं आ रही. मैं ऑफर आपका 1 मिनट. अब भैया हर बार 2 क्वेश्चन ही बनते हैं इतने मन से, 3rd क्वेश्चन कैसे करूँ ब्रो? जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. मुझसे भी अभी बना है. आई थिंक मैंने 2 या 3 बार ही 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, वरना मुझसे भी 2 ही होते हैं. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. अब कोई कोई सीक्रेट तो नहीं है. कीप प्रैक्टिसिंग. पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन करो. एक पैटर्न शीट है वो बहुत बढ़िया है, मैं आपको देता हूँ. कंपनी नहीं भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा कुक. ऑफर मेरा भाई, आई थिंक अगर वो ऑफर रिज्यूम होता है तो मैं आपको बताऊंगा. इट्स अ गुड पैकेज, लेकिन वो ना प्योरली टेक्निकल रोल नहीं है, एनालिस्ट का रोल है, तो नॉन टेक की तरफ ज़्यादा है. लेकिन आई वॉज हैप्पी विद दैट. भाई स्लाइडिंग विंडो में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इम्प्रूव कर सकता है. आई मीन प्रॉब्लम होती है कि विंडो कब इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम बैक. भाई जिस भारत भाई, फिर ना आप ये यूज़ कर लो. इसमें ना पैटर्न वाइज क्वेश्चन है शीट में. 3rd क्वेश्चन के लिए टाइम लगाना. 2 पे कंसिस्टेंट हो जाओ. 2 पे कंसिस्टेंट एग्जैक्टली. पहले 2 क्वेश्चन ट्राई टू डू इट विद इन लाइक 25-30 मिनट्स. फिर 3rd क्वेश्चन पे ही देखो. ये देखो स्लाइडिंग विंडो के पैटर्न. ये ये बहुत यूजफुल है भाई. जिसको भी मतलब जिस भी उसमें डाउट आता है ना, क्या कहते हैं टॉपिक में, पैटर्न वाइज क्वेश्चन कर लो. 2 पॉइंटर के ऐसे पैटर्न होंगे. इन पैटर्न से बाहर नहीं आते क्वेश्चंस. माई सी जी इट्स 8.2. अपने कॉलेज में CGPA लाना बहुत ईजी है भाई. वेलकम ब्रो वेलकम. बल्कि अगर इफ़ यू वांट तुम इनके उस पे भी जा सकते हो, क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे. ये तो शीट है ना, इनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो मतलब वहाँ से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा लीड कोड का. ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे को उसका यूआई इतना अच्छा नहीं लगता. ये देखो 2 पॉइंटर के पैटर्न्स. इसके अंदर ये सारे पैटर्न्स हैं जो करने हैं. कर लो एंड डू इट. थीटा AI डॉट डी ऐसे पैटर्न शीट. ओके ओके थैंक्स. मेरे 3 कज़न है भाई. एक का 30 LPA, एक बाकी 2 के लिए 40 या 50 LPA का. एक थापर से. थापर भाई साहब, भाई CSE वाले.
भयानक है भाई, 30 40 50, दैट्स क्रेजी। व्हाट अबाउट स्ट्राइवर शीट? मैंने स्ट्राइवर्स की करी हुई है, पूरी नहीं करी, पूरी नहीं करी। स्ट्राइवर क्या था उसका, स्ट्राइवर टेक यू फॉरवर्ड ना, टेक यू फॉरवर्ड A to Z मैंने पूरी नहीं करी। बहुत बढ़िया है भाई, यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन फॉर स्ट्राइवर शीट, लेकिन मैंने पूरी नहीं कर रखी। बहुत बढ़िया है, देखो जैसे इसमें तो अभी 24 ही करे हैं, और SDE शीट में भी 24 करे हैं। अच्छा 24 कर रखे हैं, ओके। मैंने नीट कोड 150 में करा था, मैंने नीट कोड 150 कर रखी है भाई। मेट पे डेव पे ध्यान दे या DSA पे, गुड पैकेज के लिए, और कॉन्टेस्ट रेगुलर देते रहो। हाँ भाई, गुड एडवाइस भाई। मेट में लेट मी टेल यू ब्रो, इट्स रियली ऑसम। हाँ इट इज़ भाई, नो डाउट अबाउट दैट। कल से 20 क्वेश्चन कर चुका हूँ भाई। अथर भाई तो भाई DSA पगलू, लाइक you A to Z includes neat code question in it. हाँ of course, अब you can say neat code 150 is a subset of A to Z, strivers A to Z, वो तो सही बात है। और जितने भी मैंने इंटरव्यू दिया है ना, उसमें स्ट्राइवर की शीट से ही क्वेश्चन पूछे हैं, नथिंग क्रेजी। मेट पे डेव पे भाई बैलेंस कर कर चलो एपेक्स भाई। अपने क्या होगा DSA में, तो यू हैव टू बी गुड। कोर CS सब्जेक्ट्स ना आपको आने चाहिए। कोर CS सब्जेक्ट्स भी बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में। ऑन टॉप ऑफ दैट एक या दो प्रोजेक्ट जो आपको इन डेप्थ पता होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में उसको एक्सप्लेन कर सको, डिफेंड कर सको। दैट इज फॉर मेट। और बहुत सारा लक, लक के बिना तो कुछ नहीं होगा भाई। When we started using a website because of content and not because of some third party links. ओके, और टाइम है मेरे पे, आराम से करूँगा, आराम से करूँगा। तो अथर भाई, हैव यू लाइक स्टॉप्ड प्रिपेयरिंग फॉर जेई क्लियर करते नहीं हो? जेई की तैयारी, हैव यू स्टॉप्ड इट? ओके थैंक यू भैया, वेलकम। कितना बज गया? हाँ इसलिए क्वालिटी पे फोकस करो, लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा। यही कर रहा हूँ, बट अच्छी नहीं जा रही भाई। अगर तुम 20 क्वेश्चन डेली के कर रहे हो, तो भाई जेई कैसे कर रहे हो? या तो फिर यू कैन कम्प्लीटली साइड लाइन जेई, मतलब आपकी चॉइस है भाई, जैसे करना है। ब्रो यूर ऑनेस्ट, आई विश यू गेट 1 crore पैकेज। थैंक यू भाई, आपके मुंह में घी शक्कर, थैंक यू। और कल का ना, यू नो व्हाट, एक क्वेश्चन करते हैं जो कल का कॉन्टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन था, जो मैं टाइम लिमिट की वजह से नहीं कर पाया, वरना कल मेरा पहला ऑल किल आ सकता था। ये था ना बाई वीकली कॉन्टेस्ट, इसका ही फोर्थ क्वेश्चन था। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इसमें कुछ भयानक नहीं था। हाँ मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया था, क्या कहते हैं, टाइम कम पड़ गया था। इसको सॉल्व करते हैं, एंड आई थिंक वी कैन एंड आफ्टर दिस। कॉलेज मैटर्स, कोई भी बोल। एग्जैक्टली भाई, मजाक से हटके, इफ आई वाज गिवन एनी चांस टू गो बैक इन टाइम, मैं 11th में ही जाता और अपनी जेई प्रेप सुधारता भाई, एंड वुड हैव लैंडेड इन अ बेटर कॉलेज। कॉलेज इतना भयानक मैटर करता है, स्पेशली एज अ फ्रेशर, इतना भयानक, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, बहुत ज़्यादा। जेई परसेंटाइल, माई जेई परसेंटाइल वॉज अबाउट 95। मेरी स्टेट रैंक 352 है पीईटी में। भाई आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस पीईटी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ पीईटी। ओके तो अब इसमें हम क्या करेंगे? Nice, very low. I should call you Priya, to be honest. I mean, it's okay, bro. As long we are both respectful towards each other, bhai, there's no need to be like, bhai, I know. Where do I इसको यहाँ रखते हैं? हाँ, हमें ना
इसमें एक वॉइड वॉइड होगा सॉल्वर। इसकी अप्रोच क्या थी, हर स्टेट पीईटी होता है ना, जैसे एमएच पीईटी, मेरे स्टेट में सीजी पीईटी होता है। तो भाई अगर उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो देन गो फॉर इट ब्रो। 352 रैंक साउंड्स तो वेरी गुड। इज दैट मैक? नो ब्रो, देन एसएस का है। लेट्स से योर पी क्यू आर ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, राइट। तो अब इसमें तो अब एक तो हमें वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, और एक इंट जीरो मिलेगा, और एक हैश मिलेगा, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ लॉन्ग लॉन्ग इंट एंड हैश। इज दैट मैक? भाई अब I don't know who's watching this, if there are people watching it. हाँ, there are 10 people watching it. Let me give you very like useful trick. अगर जो CPP यूज़ करता है ना, जो CPP यूज़ करता है उन्हें पता है कि CPP में you can't make a what do you call it, unordered map with your key as int. अगर CPP में आपको int की बनाकर एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना है तो यू कांट यूज इट, है ना, यू कांट यूज इट, इसके लिए आपको एक कस्टम हैश डिफाइन करना पड़ेगा अनऑर्डर्ड मैप बनाना है तो। बट व्हाट इफ आई टेल यू, अगर आप इंट को कन्वर्ट कर सकते हो इन अ लॉन्ग लॉन्ग सिंगल लॉन्ग लॉन्ग, दो इंट को यू कैन कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉन्ग लॉन्ग, दो इंट को कन्वर्ट कर सकते हो सिंगल लॉन्ग लॉन्ग बाय सिंपली डूइंग, और फिर उस लॉन्ग लॉन्ग को की बना दो, उस लॉन्ग लॉन्ग को की बना दो। यू कैन डू इट लाइक ll की इक्वल्स टू x को 32 बिट्स राइट शिफ्ट कर दो, x को 32 बिट्स राइट शिफ्ट कर दो, प्लस y, ये आपका लॉन्ग लॉन्ग बन जाएगा ना, बिकॉज इंटीजर्स 32 बिट्स होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग 64 बिट्स होते हैं। तो ये आपके लेफ्ट के 32 बिट्स हो जाएंगे और ये आपके राइट के 32 बिट्स हो जाएंगे। एग्जैक्ट वो मैं अभी भी देखता हूँ। पहले लॉन्ग लॉन्ग की इक्वल्स टू, नाइस, यस ब्रो, बहुत बहुत यूजफुल ट्रिक है, वरना कस्टम हैश बनाना पड़ता है। इफ ये क्वेश्चन किसी ने कल सॉल्व करा था? Honestly, this is not a tough question. Hello bro, just joined. And that is a great trick. Thank you Naman bro. And guys, honestly tell me, like there was this person in this stream today who was telling me to stop streaming, कह रहा है कि stop streaming because this is not the optimal way. Cheating meeting होती है, like live attempt कौन stream करता है? So do you think that makes sense? Because I think नहीं, I think मेरे stream करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। And government college में there will be haters bro, don't worry. I mean, bhai, I'm not big enough to have haters. That is a wrong term. It's just that he had a different perspective. Okay, that's what I was thinking. Understandability 100%. नमन भाई, आज का कॉन्टेस्ट कैसा गया? Intro equals to mat, size int c equals to mat। और नमन भाई अब देखो, आई एम अटेम्प्टिंग, वो जो कल क्वेश्चन नहीं हो पाया था ना, अब करके ही स्ट्रीम एंड करूंगा। अच्छा दिया ही नहीं, मैं भी 15 मिनट लेट उठा था और मैं फिर 1 मिनट के लिए सोच रहा कि छोड़ना आज नहीं देते, लेकिन यू नो व्हाट, क्योंकि स्ट्रीम करता हूँ इसलिए आई थॉट आई फोर्स माई सेल्फ कि अरे स्ट्रीम करनी है, डू इट, दैट टू एक्सप्लेन। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू आइस गेमिंग ब्रो, थैंक सो मच। घर में पूजा है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ओ ओके भाई, करो करो। अतर ब्रो, ओके ब्रो, अतर ब्रो बाय। अब इफ जीरो इक्वल्स टू, अगर आप लास्ट रो पे हो तो आप की बनाओगे। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे फॉर int I equals to, for int j equals to 0, j is less than call j plus plus। अब आप लॉन्ग लॉन्ग, पहले दो देखे क्वेश्चन वो तो इजी थे, हो जाएंगे, 3-4 बार में देखूंगा, पीओटीटी कर लिए तो इजी थी। हाँ पहले तो क्वेश्चन सिंपल थे, मैं लेट उठा तो मैं क्या कहते हैं, मेरी रैंक गिर गई, लेकिन पहले तो सिंपल थे। थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, मुझसे भी नहीं हुआ।
long की equals to long 0 को 32 बिट शिफ्ट करके प्लस y dot y j. Three four gets the mind go wild. Yeah, first two were easy to be honest. Three four gets the mind go wild. Exactly. एक minute, let me confirm इसका syntax ChatGPT से, because it's asking for optimal approach. Exactly भाई, last के 6 टेस्ट केसेस में अटक गया ना. That's the point. Is this correct? Operator precedence. What actually happens? Correct version. Long 32. अच्छा अच्छा. ओके. एक वो और लगाना है. long 32. अब आप इसके हैश के इस की में 1 स्टोर कर दो. ऑलराइट. अगर आपका 0 1 है, अगर 0 1 नहीं है तो व्हाट यू गोना डू इज, सो व्हाट यू गोना डू, अब फिर वही करो. फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन योर कॉल j प्लस प्लस. अबे अच्छा, इसमें मॉड्यूलस भी तो करना था. हैशटैग define mod 1. what's the mod? Bro looking like a Google software. भाई प्लीज भाई. आप तो पूरे झाड़ पे चढ़ा दिया, चने की झाड़ पे. 1e9 प्लस 7. 1e9 प्लस 7. 1e9 प्लस 7. अब इसमें व्हाट यू गोना डू इज, वो ही की बनाओ. यू मेक अ की. ठीक है, की बना दिया. अब अच्छा, एक जीसीडी भी तो निकालना था. जीसीडी is going to take int x int y if y percentage x equals to 0. Bro, you made my mood good. Stream in every contest I will be consistent too. Exactly भाई, मैं बहुत inconsistent, बहुत indisciplined आदमी हूँ. But I found this hack. अगर आप देखोगे, मैंने अभी 1 महीने से स्ट्रीम करना चालू करा है. I found this hack कि if I do stream, although मेरे viewers contest पे ही आते हैं, otherwise people don't watch me, but that's not the point. It feels like कि of course पूरी आपकी स्ट्रीम हो रही है, you can't open anything wrong, और आप पढ़ाई पे ही ध्यान देते हो. So this streaming is a really good hack. I mean, if you're comfortable, you should try it too. Give x percentage y equal to turn y int gcd equals to int I equals to int limit. Your stream got recommended to me thanks to YouTube algorithm, I guess. Int limit equal to x comma y I equals to 1, not 1. Yeah, I equals to 1. I less than your limit को लिमिट को 1 से डिवाइड कर दिया. एंड i प्लस प्लस if you can say x percentage I equals to 0 and y percentage I equals to 0. gcd equals to y return gcd. if I start streaming just for myself, I know कि मैंने बीच स्ट्रीम में इंस्टा चलाने लग जाना है. सी नमन भाई, दैट्स द प्रॉब्लम. मैं भी ऐसा बहुत करता था, लेकिन अब मेरे को पता है, मैं स्ट्रीम पे हूँ तो उसमें मैं नहीं खोल सकता ना अपना इंस्टा. गलत चीज़ें दिख जाएंगी. दैट्स द पॉइंट. आई मीन, मेरे को तो ये बहुत यूजफुल लगा. यू कैन ट्राई. देयर इज वन गाय इन माय कॉलेज दैट सॉल्व्ड 1000 कोड फोर्सेस प्रॉब्लम. मेरे को पहले लगा यू टॉकिंग अबाउट रेटिंग, लेकिन 1000 ही तो उसकी रेटिंग क्या है? व्हाट्स हिज रेटिंग? मैंने कोड फोर्सेस पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करे, बट आई नेवर गिव एनी कॉन्टेस्ट. int to add रेटिंग 1600 प्लस प्लस. हाँ तो दैट्स क्रेजी. नॉट ऑन पीसी, फोन में इंस्टा वो थोड़ी दिखेगा लोग. ओह ऑलराइट. फोन पे इंस्टा तो भाई
मैं तो फोन दूर रखता हूँ. आई डोंट. ही इज इन थर्ड सेम. इज ही चीटिंग? ना ब्रो. कोड फोर्सेस में ऑनेस्टली, अब इफ आई वर टू टेल यू, अगर मैं थोड़ा ज्ञान दूँ ना, इवन आई वाज लाइक, अगर किसी को बहुत बढ़िया कोई कर रहा होता था ना, आई यूज्ड टू डाउट हिम जस्ट टू लाइक कोड की इज ही चीटिंग और एनीथिंग. बट अगर 1000 क्वेश्चंस करें हैं तो आई थिंक 1600 प्लस इज वेरी वेरी जस्टिफाइबल. लॉन्ग लॉन्ग टू ऐड इक्वल्स टू 0. अब आप क्या करो अगले कॉलम पे, फॉरेंट नेक्स्ट कॉलम इक्वल्स टू j+1, j लेस दैन नेक्स्ट कॉलम लेस दैन कॉल इन C++. अगर इफ इंट नॉट इंट, अब आप उसकी डाउन के सारे एलिमेंट्स चेक करो. डाउन के सारे एलिमेंट्स चेक करो. जस्ट मिनट. हाँ, इंट यहाँ पे भी चोजन ले लो. अब chosen equals to matrix of 0 comma j. got to go. Pooja's about to start. Okay bro, goodbye. Goodbye Naman bhai. Bhai, next time you come, do tell me about your job bhai. I'm really curious. I want to know your experience. Down chosen equals to matrix j plus 1 by bro bhai. 0 नहीं, 0+1 होगा. This is stupid. This is stupid. DC 0+1 DC and int n key equals to n key की जरूरत नहीं है. ओके बताऊंगा. int down key equals to this. down key equals to this. 0+1 होगा. 0+1 कॉमा j. अब आप क्या करोगे, आप चेक करोगे if gcd of up chosen and down chosen meet software engineer. नहीं भाई, I'm not a software engineer yet. I wish I was. down chosen equal to 1. अगर इनका down chosen equal to 1 है, to add plus equals to hash key hash down key. और mod कहाँ लगेगा? mod आई थिंक यहाँ हर जगह लगा दो. एवरी प्लेस पे mod लगा दो. परसेंटेज mod. टू ऐड प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, उसका जीसीडी है तो वो टू ऐड में आप करते जाओगे. अब आप क्या करो, हैश अप की और टू ऐड के बाद भी और mod लगा दो. टू ऐड. हैव यू कंप्लीटेड बिट मैनिपुलेशन? भाई फॉर बिट मैनिपुलेशन लेट मी टेल यू. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट बिट मैनिपुलेशन. इवन दो आई हैव, वो तो बहुत लॉजिकल बेस्ड होता है. अगर आपको बाइनरी सिस्टम आता है ना, तो बिट मैनिपुलेशन वो होता है. let me I was telling you about bit masking code forces. There was this one really good code forces article on bit masking. Not this one. bit mask मुझे मिल नहीं रहा. उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी. bit masking tutorial code forces. I can't find it bro. If I do, I'll send it to you. बहुत हेल्प करी थी उसने. add percentage equals to mod right hash up की equals to add. ठीक है, ये कर दिया, बात खत्म. ये आपका हर रो का कर देगा. इसमें क्या हो रहा है, लास्ट रो है तो वो हर उसके वन बना रहा है की को. अगर लास्ट नहीं है
तो उसकी की ले रहा है, अब की ले उसका की ले रहा है, 2 at 0 ले रहा है, अब चोजन है, ठीक है, आपको देखेगा आप चोजन और डाउन चोजन डीसी है, हाँ डीसी नहीं एनसी, डीसी प्लस जे नहीं एनसी, एनसी सी आर प्लस वन, दिस करेक्ट, लेट्स ब्रेक डाउन, ओह stupid, long. Why would they start solving questions by only solving the question, not the solution? That by only solving the questions, not the solutions. Bro, I would suggest start solving questions by only solving the questions, not the solutions. Because you can get flags mentioned in Leetcode policy. I think you're telling me to stop a live streaming contest, right? That's what you're telling me. See, the thing is, there's this guy on YouTube. I saw him and then I got inspired. Start showing. Okay, I understand what you're saying. This guy, he is an ICPC finalist. He's a software engineer in Apple. Even he does it, and he has 2,000 subscribers. I only started doing it after like watching him. He to probably did a all kill yesterday. That's what I'm saying. You cannot stream solutions. No, I get what you're saying. Yeah, I know, but people does copy from it. भाई किसी को copy करना है तो people just simply copy from ChatGPT. Why would they go on some random live stream? I mean, I do get it. He too even does it for code forces. I really like his content. बहुत बढ़िया सिखाते हैं भाई. Maybe I'll think about it, bro. You see, like you can show solutions after the contest get over. I understand, bro. But yeah, I don't know. Maybe I'll think about it. You see, he's streaming code forces round and all that. Code forces. Let me search if people do it. अभी खा रहा हूँ थोड़ी देर. नहीं वो मेरे ओट्स पड़े हैं ना. नहीं नहीं मेरे ओट्स पड़े हैं. हाँ हाँ. लाइव अटेम्प्ट. लीड कोड कॉन्टेस्ट लाइव अटेम्प्ट. ओके ये तो मेरा ही आ रहा है. You see, bhai, there are a lot of people that do it. It's not just me. Spooky coding. See, this guy is doing it too. This guy is doing it too. He's doing it with, bro. I don't give a shit. I'll stream it, bro. Highest gaming. I don't think so. Anybody gives like a shit. Hmm. I think. So. Or at the end of the day, who cares, bro? Job चाहिए, job लग गई तो we can get over this lead code arc. Rank one caught cheating live. Okay. Yeah, cool. Okay, so hash आपकी equal to 2 मैं क्लास में जा रहा हूँ. ठीक है, नाइस वन. अब की निकाली. अब चोजन इक्वल्स टू मैट. अब चोजन कर लिया सीरो और जे. फिर डाउन चोजन होगा सीरो प्लस वन और एन सी. डाउन की बना दी सीरो प्लस एन सी. जी सी डी आपका वो होगा. जी सी डी अगर उनका वन आया तो टू ऐड में कर दो हैश डाउन की परसेंटेज मॉड टू ऐड परसेंटेज इक्वल टू मॉड हैश. ठीक है. अब मेरे को आई थिंक दिस इज द सॉल्यूशन. बस इसका इतना सा था. कल ये करता तो मेरा पहला ऑल किल आ जाता. और मे बी आई एम जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट अभी सबमिट नहीं हुआ तो. अब मुझे हर एक ओके
ओके, अब मुझे हर लास्ट उससे चालू करना पड़ेगा. फॉर int I equals to 0, I less than not 0. In fact, you would want I equals to r minus 1, I greater than equals to 0, I minus minus. Okay, you're going to call solver. एक unordered map बना दो. Unordered map of long and your int. Wait, it's asking to return int, right? Huh? Long int and hash. He's a software engineer in Google. Bro, that guy is a software engineer in Apple. वो ICPC World finalist है and he is from IIT Kharagpur. No, not Kharagpur, Madras, I think. You can check his LinkedIn. He has not accepted my connection request. Matrix, and your I and your hash. Midnight Simon. Bro, there's nobody named as Midnight Simon. Okay, acha, you're talking about in YouTube, that guy. This guy on YouTube. Leetcode Practice Club, Wednesday. On. That's great. Practice Leetcode like 1900. Damn, it's a great video. That's crazy. Good for him. In fact, if you want, I mean, I'm not discrediting him or anything like that, but I think if there was a comparison of how tough is it to get into Google from India versus if you're from the West, it's way tougher in India. But he's incredible. Check his stream. Which stream? This one. How he streams. Wait, so ये भी contest कर रहा है क्या? Is he? No. YouTube chat. I don't know what I'm gonna tell everybody. Live contest one. Midnight Simon. Leetcode live contest. Where is it? To See fix my the chat live on the contest screen one. or my chat. Okay, I am trying to find it. Leetcode weekly contest. Okay. Yeah, that's the thing. I'll go That live on YouTube, man. hey, everybody does it. I shouldn't be scared to do it. Did you quit your? So I go possible and Someone is trying to get you banned at Leetcode. How do you know that, bro? just stream. You would, bro. How do you know that? Did someone post a Discuss tab? Did someone? Don't tell me someone posted in Discuss tab. Posted on the forum. Where, bro? Where is it? No, in the discuss point. Come on, bro. Like, bro, get a life by. What do you think? What's gonna happen if you like ban me?
user runs a YouTube channel. Okay, bro. Dude, what do I even say? This is why I told you. So I just don't. he doesn't solve solution. You're telling me this guy. So he is showing solutions. What do you mean? By his naming, bro, this guy is showing solutions. See, bro, like honestly, everybody does it. And if I do get banned, bhai, I don't know. Leetcode would be crazy if I do get banned at this point. Abey yaar, I don't think so. I would get banned though. Where he didn't, when I saw now he started. Haha, I don't know. It's not a. Do you think I should like? You know what? I don't care. Assuming once he doesn't show this, bro, everybody does. Come on, don't worry, bro. Hi, क्या हुआ? Rohan, bro. Rohan Souza, bro. You missed this. You remember that salty guy that came in the chat, that plumber or whatever was his name? This, this guy I'm talking about. I read Leetcode in community, but he didn't understand it. Bhai, I think let's just not give him views because अगर views दिया तो Leetcode will push this post. He did it from anonymous profile because okay, let's leave it. I would suggest remember, bro, doing bad to people will do no good for you. Yeah, I mean, yeah, you're right. That's that's right. अब I don't know. I think we अगर कोई stream से हो so please don't view this post because अगर इस पे views चले गए तो I think Leetcode will push this. Do you have a job, please? No, I'm a student. एक minute. Yeah, I'm sorry. Ignore that guy. Yeah, you're right. This guy is solving it. Everybody solves it. Come on. I shouldn't be scared. अगर हुआ तो हुआ. No worries. We were solving this question. उसको करा solver matrix I और hash. That's it. Solver करा तो hash में value जाती जाएगी. Now आपने करा for int I equals to 0, I less than c, for int not I, j less than c, j less than c, j plus plus, int answer equals to 0, answer plus equals to, oh no, you'll have to make a key, long key equals to
How do you make that key A plus G long 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 0 को 32 कर दिया. हाँ, तो this would actually just be J, but that doesn't matter. Answer plus equals to hash of key, right? Return answer. Where is it? Column. Let me just write it as column. 0 should be actually equal to r minus 1. What does these guys get for thinking that someone like, bro, mind your own business? Bhai, that's how the world works, bro. The earlier you get used to it, the better it is. इतनी गाली दो इतनी कम. कोई ना bro. Invalid operand. So binary expression int and double. To add है अपना long long plus hash down key percentage mod. What's the issue here? What's the issue here? Invalid operands. Wait. To add plus equals to hash, or just do it like this. Still any issue? अच्छा शायद I think इसमें दिक्कत हो रही है. 1e9 plus 7 10 9 plus 7, right? I'll have to in CPP how to do this. Constant and okay, I'm stupid. Second case तो चल गया. First case में we're getting 2. Why? GCD of x y equals to GCD. Wait. Someone just posted a question in forum. I just saw. Exactly, bhai. People are doing way bigger wrong deeds than a simple guy who's streaming. These guys are just too confident too. Where's the discuss? Hi, so I read the Leetcode and it mentioned that is not allowed. Yeah, I mean, you're right that it is not allowed. So technically, you can defend yourself by saying that you're not doing that. Technically, see, the thing is, Ro, why I call you Ro? A lot of people do this. I just showed a Google engineer doing the exact same thing. He is live streaming contest with solutions on YouTube. Discuss post में डालना गलत है. Exactly, नहीं. I think अभी Heist Gaming में he told me about a YouTuber who is a software engineer in Google and he also live streams Leetcode. हाँ, live streaming on other platform is legally correct. This guy just like a Karen. कोई ना bro. Why Leetcode has tons of other things to do.
3 का 2 आएगा, 3% 2 में आंसर आएगा 1, 2% 3 में आएगा आंसर 2। इसमें why aren't we see out live streaming another exactly right? Wait a minute. GCD of up chosen. Nah, they ain't banning you, bro. उनका धंधा भी चलना है, similar to playing game on stream. Do the ban you? Exactly, like, yeah, that's actually very correct. Up chosen and down chosen equals to int GGCD equals to GGCD. I don't care अगर ban हो भी जाता हूँ, so it's not like the end of the world. But honestly, I do care. I hope I do not get banned. But yeah, it wouldn't be end of the world. So GCD of 1 and 3 is 1. GCD of 1 and 4 is 1. Bro wasted an entire 30 minutes for making that forum to say someone is being consistent solving questions on his own. Exactly. If we wanted to, we could like make some effort to ban the other cheaters who's cheating. I'm solving it completely on my own. I'm not doing any cheating. फिर भी some people have no life, bro. Absolutely. It's not like I'm cheating or anything. I'm doing everything on my own. अब if 0 equals to r minus 1, c out 0 0, नीचे वाला लूप चल नहीं रहा है, I think. uh, what what is the issue here? मैं 0 दे रहा हूँ r minus 1 से लेकर, जैसे यहाँ पे 2 है तो 0 होगा, अगर 0 लास्ट है तो आप ये चलाओ, अगर 0 लास्ट नहीं है else so j equal to 0, hands down key. Where am I going wrong? Oh wait, sorry. Oh, 0 is this. 1 and 3 का 2 and 4 का it took at 2, so उसने 1 and 3 का 1 and 4 का 2 and 3 का, why didn't it check for 2 and 3? NC is not equal to j, NC equals to 0. This is your next column. Okay, this is the issue. My rank is still that no one is getting banned. Why it happened only in the starting 5-10 minutes. उसके बाद नहीं होता. Okay, so I think, at least I hope this is correct. Should I submit it? Let's try to submit it. Okay, acha, it's a single test case. If r equal to 1, return 1. Return how many columns are there actually? Right. Return how many columns are there? My rank is still that. What was your rank? Highest gaming? Column dot size is match 0 dot size. What? But wait, why did it not?
If r equals to 1, you want to return 1. Okay. Expected 0. What's the exact question? Choose exactly one integer from each row such that acha, we want to return 0. Stupid. Bye. If r equals to 1, so then we just count int 1 is equals to 0 for int bro give me tips why I'm not worthy of giving anybody tips why I'm also myself just learning. Like, what tips do you want? Learning. I is less than your matrix is the how to revise DSA pass. अगर आप consistent रह रहे हो ना, so there's no like nothing to be as such कि रिवाइज करना जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स को करते हो. जैसे for the OAs I give, I just have a notebook. For the OAs I'm open to tips from anyone. Okay, nice. जो I have a notebook जिसमें I just write important patterns and some important things that I've learned, जैसे bit masking के बारे में लिख दिया. I just read that before an OA or an interview for DSA. बाकी तो it's just consistency. बाकी आप भूलना चाहिए. That's the thing. क्योंकि at the end of the day कोड लिखने की तो आदत से आता है ना. I is equal to 0. I is less than C I plus plus. What was your rank in this contest? I have notebook for DSA. Yeah, good. Maintain a notebook, उससे बहुत help हो जाती है. Maintain a notebook. It's really good. I write everything in. बिटमास्किंग के आर्टिकल मिला तो शेयर कर देना बाद में पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में. हाँ भाई, आई विल ट्राई टू. वो बहुत एक्चुअली में बहुत यूजफुल आर्टिकल था. बहुत यूजफुल आर्टिकल था. उससे मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के आई थिंक 20-25 मिनट बैठा था, लेकिन आई वाज क्रिस्टल क्लियर विद व्हाट बिटमास्किंग इज. I equals to 0. Probably bit manipulation, bit masking, tutorial code courses. I think एक मिनट में अपनी आईडी बदलो ना, तो then I may be able to find it. मेरी दूसरी आईडी का था bit masking tutorial code courses. Bit masks introduction to DP. No, not this. Not this. Representation. Not even this. This is your bit masks for beginner. I mean, ये भी काफी अच्छा होगा. If you want, you can just see this one. ये भी काफी अच्छा हो. Oh, this has -6. -6 downloads. Wow. Bitmask for beginners. Bitmask. I'll try to find it, bro. If I find it, I'll send it to you. Point I equal to 0, I less than C. If mat I 0 C equals to 1, once plus plus return once. What am I doing? Not C, it's I. अब चल जा यार, प्लीज चल जा. 1 2 2. The output is, why is the output 2? इसका तो 1 आना चाहिए. I less than, what am I doing? I less than mat
0 dot size. Oh, okay. आउटपुट इज 0 1 2 2 के केस में व्हाट इज द जीसीडी? GCD of 2 is 2. GCD of 1 to 2. If they say no, then you can instead stream after contest or make videos express. You must have given no as an interview, bro. Tell me. If Rohan bhai, I don't think so anybody is gonna like, at least I hope कि nobody is going to react to that post. बहुत सारे लोग करते हैं भाई. And let's see what happens. I'll see. Must have given no as an interview, bro. Tell me how you revise DSA or how you revise all DSA. हाँ, that's what I'm saying. अब at least fourth year में आके तो you have to be extremely consistent with DSA. और OS में ना बहुत ही standard template questions पूछते हैं. They don't ask crazy questions. At least जितने मैंने अभी दिए हैं interviews में भी. I've always मैं like in a recent interview I gave, I can like very smoothly clear the DSA rounds. Yeah, exactly. नहीं, I don't think lead code developers have that much time to see that form. नहीं, what actually can happen is if his post reach a lot of people and they agree with him, they will report my account और फिर तो मेरा account टूट जाएगा. कोई बात नहीं bro, will that अब जो होना होगा होगा. That's the thing. Wrong answer. 708. The 2 and 2 is from 2. Okay. If GCD equal to 1, I think we have to add another condition. Yeah, up chosen equal to down chosen है. See bro, I was overestimating this question. Must have given OS how you revise DSA. Wait, what happened? भाई एक मैसेज भेज रहा हूँ पर तुम्हारे स्क्रीन में आ नहीं रहा. ओके अच्छा रुको मैंने टॉप चार्ट खोल रखा था. भाई अब आना चाहिए. Try sending it. You must have given OS in interviews. हाँ bro, interviews में they ask very standard template question. Like if I were to tell you recently एक वो पूछ लिया कि trapping rainwater, very standard question अगर आपने कोई भी sheet follow करी है. एक वो पूछ लिया number of minimum platforms required for a train station, arrival और departure time given है, वो पूछ लिया. Very standard template greedy question. हाँ stack वाला, trapping rainwater stack वाला, एक largest area in a histogram. हाँ, लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम. ग्राफ वाला नहीं, वो ग्रीडी वाला है. आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग विद सम अदर टाइप. बहुत स्टैंडर्ड पूछते हैं लेकिन द पॉइंट इज दे विल ट्राई टू मेक श्योर. अब क्या होता है काफी बच्चों का क्या होता है, दे जस्ट लर्न कि अच्छा यहाँ स्टैक यूज होगा वो होगा. अगर उन्होंने कोड नहीं कर रखा ना तो आप फंस जाओगे क्योंकि मुझसे वो ड्राई रन करवा रहे थे एग्जैक्टली. द सेकंड क्वेश्चन आई सेड आ ही नहीं रहा रोहन भाई. अब व्हाट डू आई डू? मैंने तो कर रखा है यार. आई हैवंट लाइक, what if I add you as a moderator? Maybe then standard moderator. पता नहीं bro. रोहन भाई, रोहन डिसूजा. Second question I said. Second question is this one. Minimum train station required. ऐसे question ऐसा कुछ था. Minimum platforms required. Okay. या लिंक्स तो भेजना किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम में अलाउड नहीं होता है. आई डो नॉट नो अबाउट वायलेटिंग वो. आई डोंट नो. I'll have to check upon that. Isn't that graph question?
Nah, bhai, this is a pretty standard DP question if you look at it. This is a pretty standard DP question. Do we see the discuss? Bro, where's the post that guy made on me? There was a question in graph and also like that. Okay, there might be. Oh yeah, there's the post. Yeah, it has 84 views about this user. Do you work or just pass out this year? I'm in my fourth year, buddy. Radhe Radhe. Whether you can live stream or not. Rohan, if this is no, it says start streaming after contest. See, what I'm telling you about, Rohan bro, listen. There's this guy, Midnight Simon. Let me show you this guy, Midnight Simon. Yeah, he is. I just want your profile. Yeah, thank you, bro. Thank you for your concern. But this guy, he's a software engineer in Google. Let me show you his lead code. Okay, he is 1900 rated. He's a knight, and see, even he is live streaming lead code with solutions. Everybody does it. Who's that random guy who's stopping me? अगर delete होना ही है, so do you think इसका 1900 rated account भी delete होगा? Exactly right. And besides that, this guy Teja Drunudala, he is a ICPC world finalist. He is a ICPC world finalist. He streams it too. He's a ICPC world finalist, and you can see this is a live contest. He streams it too. होना है तो अब सबका ही बैन होना होगा भाई. बस इनकी वजह से कुछ ना हो बस लॉल. हाँ, that's the thing. If his post reaches a lot of people and people agree with him, they can report my account and delete it. लेकिन कोई ना भाई, मैंने कितने 300 क्वेश्चन तो करे हैं, and it's not like कर लेंगे. और see, the point is, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. I can't make him delete his post. It's not in my hands right now, so I don't want to worry about that. Have you solved 3D question? Third question? No, bro, I couldn't solve third question today. Yesterday I was able to solve 3 questions. 1 to 2. 1 and 2 and 2. The greatest common divisor between 1, 2 and 2. 2 and 2 के बीच में GCD is 2. Okay. यहाँ पे भी कर सकते हैं. Check whether she's cheating or not. She's from my college. Adit 3. Can you check my code? Okay, Mayur bro. Triple ID Delhi. Adit 3 Jain. Simple band system. Okay. Okay. अभी तक तो she has only like submitted pretty simple questions. 47, 50, 95. She has done 140 to 300 medium. Mayur bro, send your lead code ID. Hmm. Okay. This is a DP type of question. I think. Ingale Mayur. This is, what is this question? Mex वाला ना. हाँ, ये तो मैंने stream पे ही solve करा था, if I remember correctly. Bro, I don't know. I can't tell यार if she's cheating or not. CSAI triple ID Delhi.
She doesn't even have to cheat. Her college is so good. Her branch is so good. She'll easily get a job. And I don't know. As far as I've seen, she looks like pretty honest. Ingallable. Remove zeros in decimal representation. Okay. Yeah. Use map to store prefix now and their count for each value of given array. Okay. Radhe, let me discuss my remove zeros. हाँ नहीं इंगाले ब्रो यू डूइंग गुड बट एन ईजियर वे आई मीन जो आपने करा वो भी सही है लेकिन ईजियर वे हो सकता था कि अगर आप स्ट्रिंग इसको इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो फिर एज अ कैरेक्टर इटरेट करो हर किसी में जहाँ जीरो है उसे ऐड ना करो इट्स गुड इनफ इन क्वेश्चन 3 ओके लेट मी टॉक अबाउट क्वेश्चन 3 माय कॉन्टेस्ट्स दिस इज द क्वेश्चन राइट क्वेश्चन 3 right that's what I'm saying see that's what I'm saying मैंने यही करा है बट आई स्टिल गॉट अ टीएलई आई स्टिल गॉट अ टीएलई मैं क्या कर रहा हूँ मैं पहले जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है ना डुप्लीकेट एलिमेंट है उन सबका इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ जैसे इफ देयर वाज दिस array like uh, let's do it like this tell me where I'm wrong radhe radhe bro tell me where I'm wrong a b c d a d c k ठीक है अब व्हाट आई एम डूइंग इज ए के लिए सारे इसके इंडेक्स से स्टोर कर रहा हूँ तो ए के इंडेक्स हो गया एट 0 and 0 1 2 3 4 0 and 4 अब मैं ऐसे सबके इंडेक्स से स्टोर कर लूंगा अब मैं क्या कर रहा हूँ सबके इंडेक्स से स्टोर कर लिया प्रीफिक्स सम तो बना ही लिया हाँ दैट वाज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग प्रीफिक्स सम तो बना ही लिया अब मैं क्या कर रहा हूँ जीरो जब इसके इंडेक्स स्टोर कर लिया ना जैसे मान लो 0 4 8 13 ऐसे आ रहे थे तो मैं 0 और 4 का देख रहा हूँ इनके बीच का प्रीफिक्स सम अगर इक्वल आया ए के तो सिंपल आंसर प्लस प्लस हो जाएगा 0 8 के बीच में देख रहा हूँ 0 13 के बीच में देख रहा हूँ फिर मैं देख रहा हूँ ऐसे 4 13 4 8 फिर मैं देख रहा हूँ 8 13 ऐसे करके सो आई थिंक इसकी वजह से टीएलई आ रहा है व्हाट डिफरेंट कुड आई हैव डन and then let's see 0 is not equal to 0 equal yeah, 2 2 1 out of 0 the expected should be 1 okay let's think about this later I'm doing something ridiculously stupid so what's the TC of your approach in its worst case I think it's going to n square in its worst case it's going to n square अभी ले रहा हूँ ले लेता हूँ अरे रख लो मैं अभी ले लूंगा नहीं नहीं आप खा लो sorry 10 n square will not be accepted bro 10 power 8 is the lead code limit it's asking for on etc I mean on तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा probably I think o n log n में हो जाएगा o n log n में हो जाएगा o n तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा बट कल के कॉन्टेस्ट के फोर्थ क्वेश्चन में मैं कहाँ अटक रहा हूँ यार आई थॉट आई कुड सॉल्व इट व्हाट लाइक 2 2 1
10 power 5 was the input. I get it. So you're telling me 10 raised to 10 is not acceptable. Makes sense. 2 to 1 में 2 और 1 का GCD 1 आया है, तो आप यहाँ से 1 में जा सकते हो. अब 2 और 2 का GCD 2 आया है, और 1 to 2 में 2 और 2 का GCD अगर या तो सेम हो let's try to write a simple condition. If GCD equal to 1, yeah, अब chosen equal to 1, something like that. वो तो GCD में ही आ जाएगा ना फिर. 10 power 5 was the input. Makes sense. Constraints 3 capacity. Hmm. I know. अब n square में ही अटकता है वो. कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज करना था. I couldn't. Yeah. Yes, you're right. 1 1 2 2 2 2 1. सी कोई ना, मेरे साथ भी यही हुआ. What's your rank in this contest? Ice gaming. What's your rank? इसका GCD 1 आएगा तो यहाँ पे आएगा. मेरे साथ भी यही हुआ. 2 and 2 का GCD would be 2. Hmm. 9K 2 ही के 9K. Did you start late? Late start करा या फिर wrong submission हुए थोड़े? 1 to 2 में 2 से आप 2 में जा सकते हो. If it is not 37 मिनट लग गए सेकंड करने में. लगा व्हाट वाज सेकंड. अच्छा हाँ सी, अब सेकंड करने में व्हेन आई डिड इट आई कुड लाइक रिकॉग्नाइज इट कि इसमें तो सिंपली हमें दो सब एरेज में डिवाइड करना है. एक में मैक्सिमम एलिमेंट्स, एक में मिनिमम एलिमेंट्स. एंड दैट्स जस्ट बिकॉज आई थिंक मैंने वैसे सिमिलर क्वेश्चंस कर रखे हैं. बट यू आर गुड. आई मीन प्रैक्टिस से ही बेटर हो गए. 1 से 2 में 2 में कैन गो इक्वल टू 1. 2 से 2 में जा सकते हो. 2 से 1 में नहीं जा सकते. आपका GCD सब 1. चलो यार, honestly, अब let me do this later. Let's take a last look at the. You know what? What's the good thing about this? That guy posted me on Leetcode. The good point is, uh, who knows if that post goes viral? I'm getting free publicity for my YouTube channel. See, look at it from a good perspective. That's the thing. Let's see, did he get any views? Temporarily ban my friend ID as did code with his friend in room, but not. Okay, there's one comment. Try mailing at support. I doubt they'll take any action. Instead, will flag your post. But still, you can give it a try. I can't able to share logic in comment. Okay, हाँ वही सोच रहा था. I feel like I doubt they'll take any action. Instead, will flag your post. But still, you can give it a try.
Bro, just use it. Log. Sharing a code snippet during a contest in any form is considered as cheating. That guy has 400 rank, Nikhil. Bhai Saab. You know what? Let's just connect on LinkedIn with him. He has done 2000 questions. 2600. When did he graduate? In 2020. He can't even report his course because that will flag his course and will bring attention to your. Yeah, I mean, no worries, bro. Leave it. See, that's the point. Agar if they are banning me for this, there are a lot of others. Google engineer ka with a 1900 rating, uska bhi ban hoga kya? Will he be banned too? And bring attention to your. Yeah, no worries. And you know what? At worst, Leetcode first gives you a warning. Leetcode gives you a temporary ban. Leetcode gives you a temporary ban. Okay. Disclosing contest related in public discuss post. Submitting. First violation, contest score resets to 0, lead code amount resets to 0, and a contest and a discuss ban for 1 month. That's the issue. But bro, if that Google engineer even got banned, what would he do bad for him? Once you get good at DSA, anyways, you can get good ratings quickly. Yeah, see, अब lead code profile से थोड़ी कुछ होता है. The recruiters don't look at your lead code profile. उन्हें तो चाहिए होता है कि यू कैन डू डीएसए, वरना तो लीड कोड पे लोग जीपीटी से भी कॉपी पेस्ट करके अपनी प्रोफाइल बढ़ा सकते हैं. दैट्स द थिंग. जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके. Once you get good in DSA, you can get good rating quickly. I mean, I'll start and check here. Oh, I can't see your comment. I can't see your comment. Did I add some form of? मैंने कोई moderation भी नहीं add कर रखी. I don't know why. See 4.4 contest violation. हाँ, that makes sense. Disclosing content public discuss before the end of a contest. Link नहीं भेज सकते. Yeah, that's correct. Which year? I'm in my 4th year. Bro, honestly, this is this is gaining a lot of views. This is gaining a lot of views. इसके 110 हैं. बाकी के 5 घंटे में 300 हो रहे हैं. Nothing is gonna happen. So जाओ. Yeah, I don't care. Unable to send link here in chat. हाँ bro, you cannot you cannot send link here in chat. Link नहीं, as plain text paste कर दो. HTTP वगैरह remove करके I'll open it myself. Hey, he too is definitely getting quite some views. Where's this guy? Yeah, he got 3 upvotes. Come on, bro. Let's see, bro. Let's see what's gonna happen. समझो भाई, बैन भी हो गया है. टाइम कंप्लीट. अब सिर तो आएगा लॉट. हाँ हाँ, खा रहा हूँ. अरे आ रहा हूँ. Leetcode doesn't care, bro. See that? This would have banned his Leetcode ID. Yeah, I mean, but they didn't.
भाई सी, इवन आई हैव नो लाइक एक्सपीरियंस इन दिस की बैन होगी कि नहीं, मेरे साथ भी पहली बार ही हो रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आई मीन आई होप कि बैन ना हो, लेकिन अगर हो भी जाती है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डीएस से थोड़ी बोलूंगा मैं, आई मेक न्यू आईडी, राइट, दैट्स द थिंग। दे वुड हैव बैंड दिस लीड कोड आईडी बट दे वोंट बैन, ये तो श्योर है। हाँ नहीं होगी, थैंक यू, वो नहीं होगी आई वुड प्रे। हाँ हाँ, द वर्स्ट आई थिंक दैट कैन हैपन इज आई गेट अ वायलेशन, वो जो होता है ना कि 1 महीने के लिए यू गेट अ बैन एंड योर लीड कॉइन जीरो हो जाते हैं एंड ऑल दैट, वो हो सकता है। That might happen in the worst case scenario. And the best case scenario is I get viewers for my channel. See, it's a spectrum. Online, what is this? Online GBD, not found. Bhai, I'm in third year. Any advice, bro? No advice. If you have any advice for me, please give me any advice. DSA karo. You will uh, get chance to defend, though they will mail you. That's a good reminder to check my email. No, nothing. Nothing as of now. You'll get a chance to defend, though they will email you. Let's see. Let's see what's happens. What's going to happen? Bhai, how do I open this? Online GBD के आगे क्या लगाना है? I wrote this. इसके आगे क्या लगाना है? Bro, defend कर देना. Yeah, I of course will. Midnight Simon की stream दिखा के Midnight Simon की तेजस ड्रोनो डोला की. To be honest, yeah, I'll be showing every. But Leetcode doesn't care. The only way I'm going to get is banned is because of mass reporting. Online GBD, राधे राधे ब्रो, इफ यू वांट टू शेयर अ लिंक, जो भी लिंक है ना उसके पहले का ये हटा दो, HTTPS और www, और ऐसे शेयर कर दो, .com भी हटा दो। और थर्ड क्वेश्चन ये ट्राई करो। वी आर आउट हियर डिस्कसिंग कि मेरी बैन होगी कि नहीं, एंड राधे राधे इज ट्राइंग टू टीच मी द थर्ड क्वेश्चन। नहीं हो रहा यार, मे बी आई एम एंटरिंग द लिंक रॉन्ग। लिंक का फॉर्मेट यही है, या तो फॉर्मेट बता दो, पेस्ट बिन में दे दो। लॉल, आई डोंट गेट इट ब्रो। अब मैं उसकी पोस्ट ही देखता रहूंगा। Why can't you email him? Email whom? Email whom? Nice gaming. Okay, email ID. That's my email. Send me an email. See, this was a tough question. 17% acceptance rate is very low. Do you think I should contact that guy on LinkedIn? जिसने comment करा? Do you think I should contact that guy on LinkedIn? जिसने उस पे comment करा था कि try emailing, and probably ask for his perspective. Don't? Okay, I won't. क्या पता blackmail करे? Okay, I don't think so he cares much, bro.
Oh, you're talking about Nikhil? Yeah, I'm talking about the guy who commented, not the guy who posted, but the guy who commented. Yeah, you should, cause he's 400 ranked. Okay, let me first check what is this guy. Okay, what have you done? प्रीफिक्स सम मैंने बना दिया नेस्टेड हैश मैप में वैल्यू प्रीफिक्स सम और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी अच्छा नेस्टेड हैश यही तो नेस्टेड हैश समझ नहीं आया ना मुझे स्टोर कैपेसिटी I minus 2 prefix I minus 2 info for the futures. Yeah, bro, your code is correct, but of course it is correct. I'm not validating it, but I don't get कि हुआ कैसे मुझे समझना पड़ेगा. हाँ, I think I can contact him, Nikhil, right? What was his name? Nikhil. Open link in private window. Let's open this here. Oh, but I've already sent him a connection request and I can't message him. I can't message. I don't have LinkedIn Premium. You see, bro, I will try to do it. Thanks. Hmm. Okay, bhai. No worries. It's funny, bro. It's actually funny. Like, does he not have work to do? Hmm. कोई ना चलो. Contest and what were we doing? Yeah, I think reporting someone being consistent in 2025 with Ajit. No worries, bro. But yeah, if that happens, if I do get like what do you call it? Banned, फिर सब ban होनी चाहिए. That's that's how sheer logic works. मैं ban करूँ then Tejat Runudola and that Google guy, everybody, and that cat person, right? Everybody should be banned. Nobody should be allowed. Hmm. ओके बहुत ही लंबी स्ट्रीम हो गई आई थॉट कि कॉन्टेस्ट जल्दी देके वापस हो जाऊंगा लेकिन ऑनेस्टली जो भी हो इंटरेस्टिंग तो है लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन nonetheless I think I'll end it here now. Yes. Okay, Heist Gaming, thank you for staying till the end. I have to eat lol मैंने भी खाना नहीं खाया. I have to eat. Okay, thank you so much. Bye bye.